शायद शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं आँखों को ख्वाब देना खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से बिन काम काम करना जाना कहीं हो चाहे हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से ये कोशिशें चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं जो तुम ना हो Baby, I'm hollow, found peace in a bottle. Can't tell you the sorrows inside of my head. I'll see you tomorrow, I hide all my problems. I never like talking, not even with friends. The liquor I'm mixing, looks out of your vixen. I'm tryna get in here to clear up my head. Got people I live for, got dreams I would die for. And not for all the people I hate. Cause I'm alone and nobody else knows it. I pour a glass of whiskey so I don't have to show it. And I got pain and nobody else knows it. I pour a glass of whiskey but I still can't control it. Hello. And I hate that I fake the smiling, but there's a lot of things that nobody knows. And I don't recommend you prying about things you don't know. Baby, Hello. I finished the bottle. I still got these sorrows inside of my head. Won't see you tomorrow, I think it's a problem. I do this shit often, not even with friends. Looks out of your vixen, I went and got in it. She off of my head, listen, she inside my bed. Got people I die for, they say I should live more. Can't see all the good when I be feeling this hate. Cause I'm alone and nobody else knows it. I pour a glass of whiskey so I don't have to show it. And I got pain and nobody else knows it.
ओके, एवरीथिंग इज सेट। काय से मिला? यस। हेलो विशाल। हेलो हेलो भाई से। हेलो 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 हेलो। 11:30 हो गए भाई, बहुत लेट हो गया। 11:30 को तो मैं घर पे आया हूँ, तो फिर उसके बाद नहाया खाया एंड आ गया। दैट्स इट। नोबडी नोस। विशाल खंडेलवाल, नोबडी नोस। हेलो रायजन। जेनियस को निकाल दिया भाई G2 से। व्हाट द फकिंग। 10 मिनट बाकी है। हेलो प्रथमेश। बस चाय बजा होगा आज। सब बजते हैं, बजना इज फ्री ब्रो, एवरीवन डज इट। कौन से चैनल पे लाइव है मैच? यही चैनल पे हम देखेंगे साथ में। वैन बूट कैंप 15 हेलो SCIGL भैया, आ जाओ भैया, मैच देखते हैं भैया। लव इज ऑल्सो कमिंग टू स्पोर्ट्स गाइस सून। उसकी भी ऑर्ग अनाउंस हो जाएगी वेरी 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 सून। मेरा मर गया क्या बॉट? नहीं, जिंदा है। मैंने तो थोड़ी ना ऑर्ग का नाम लिया भाई, मैं तो बस बोला यू आर कमिंग टू स्पोर्ट्स, वेलकम टू द फकिंग साइट। निचड़ कल तो आया नहीं। एनिग्मा बैड लव, आई एम नॉट नेमिंग नेम्स। ट्विच पे आने का कोई प्लान? नोप, आई डोंट हैव गुड PC nor do I have that amount of audience. I don't think. Never ever. पता भाई। Who is the IGL? ऊपर वाला। 4,500 बिटरेट पे मेरी स्ट्रीम चल रही है। बहुत ही गंदा दिख रहा हूँ मैं, कैम देख बता नहीं सकता, तुमको बहुत गंदा दिख रहा हूँ। यश भाई गए सोने, कल रात को फुल नशा, और नाइट फुल, वैसे ही फुल टाइट ही रहते हैं अपन तो। नाइट ऑल्सो टाइट। अभी 4,500 6,000 पे और सेक्सी दिखूंगा, और सेक्सी। WD ब्लैक वाला नहीं खेल रहे, मैंने बहुत बुरा किया। मैं और भी बुरा कर सकता हूँ लोगों को और का नाम लेके, बट नहीं लूंगा। Shut the fuck up, motherfucker. Sweating me like she be in a sauna. Tryna bend her down in Tijuana. Got her money taller than the plaza. Got a lot of drip with no water. I'm on shotgun with no soda. She know them problems coming with the Prada. I just damn up, so I'm up now. TSM वर्सेस GenG कप 5 मिनट में मेरे भाई, 5 मिनट्स। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने कुछ नहीं किया तेरे साथ आज को। क्या तुम सब कुछ नहीं पिया? ओनली वाटर, प्योर वाटर, स्प्रिंकल वाटर।
थोड़ा माउस वाउस घुमा लेते हैं, तो ऐसे ही बंद करना है। Red Bull, I'm not rich like that, bro. फेवरेट प्लेयर जेनजी में से आई थिंक उनका सोवा जो है अच्छा खेलता है वो, और टीएसएम में से पता नहीं, टीएसएम में से कौन, प्रोबेबली ड्रोन और सबरोजा। Model, no, I don't like Jules New Agent League. I don't like Waddle that much. I mean, अच्छा है obviously, but मेरा favorite नहीं है। It just get lonelier in the stress. No, I'ma hold a race in my hand. Might just go turn her ass to a fan. Yeah, necessity never no greed. No, I'm worth more than it seems. You average, my shit is mean. Cause I keep a chip on me. Pray nobody switch on me, or it's gon' get a bit stormy. I know it's all on me, yeah, yeah. Lately I feel like an addict. They tell me watch out, but it's not about a paddock yet. I got a stack of this money, the fuck is you talking about? I gotta get it now. All of the family gon' eat when I get on my feet, so best watch where you stepping now. GenG जीतेगा पता नहीं। माशा इस बार आइसलैंड में फुल बूम बाम, फुल बूम बाम। Tell the little bitch if you keep talking we can get busy. Get rich or die trying to it like Fiji. Ball like Trevor Dunn, bomb too shifty. If it's bad blood, I tell her ass swift. I said dead faces like it's genocide. On the fence, shorty going to the side. No, you can't be no friend of mine. Double cover me, get crucified. I'm so sincere, I've been here. You ain't know me, bro, it's been years. You about to be on, that's what they feel. When I drop down, mama shed tears. I just been planning on the next year. कितने बजे मैं 2 मिनट में 2 मिनट्स अभी 2 मिनट में Hello Spirit. Shout out to you, bhai. Beat Siege. RVK Live Blaze Sports coming to Hello. Yes, I know, I know. Sir, there is a risk of volcano. People say they feel Earth is shaking 24/7. Let's go. Enjoy while it lasts. साय स्ट्रीम करेगा 15 तारीख को 15th।
चलो बॉयस, चालू तो हो गया है, नहीं हुआ है, 1 मिनट बचा है और उसके बाद कास्टर्स बात करेंगे ऑब्वियसली। सब कुछ सेट करके रखता हूँ। When where is it streaming? मैं यहाँ स्ट्रीम करूँगा, वैसे ट्विच पे हो रहा है। उठ के हम कब जा रहे हो? 15 को। कॉपीराइट नहीं लगेगा, ये कॉपीराइट फ्री सॉन्ग है मेरे भाई विनय। अब तक जी वर्सेस टीएम का रिव्यू हो जाए। आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक वेयर यू आर गोइंग। भी थोड़ा एड्स चलेंगे, कास्टर्स बात करेंगे, एनालिस्ट बात करेंगे, देन विल स्टार्ट। डिड यू नो? यस आई नो, राइट टू स्ट्रीम्स ऑन ट्विच। उसकी अच्छी खासी को फॉलोइंग है एंड ही इज आल्सो वेरीफाइड, तो यू नो हेल्प्स। यहाँ भाई ट्विच करूँगा मैं, मेरा फ़ोन, मेरे दोस्त का फ़ोन, मेरे भाई का फ़ोन, दैट्स इट। आई मीन मैच के स्ट्रीम का कॉपीराइट नहीं। आई हैव टेकन परमिशन, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने परमिशन लिया उन लोगों से, यू नो। पूरी चैट को वॉल्केनिक इरप्शन और भर दिया, बजो बजो। भाई उसके अच्छे खासे व्यूज आते। अबे उसके नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। वो लौंडे पूछ रहे कि मैं क्यों करूँगा, उसके तो आते ही ऑब्वियसली। आई ऑल्सो वॉच हिम। तक एनालिस्ट भी नहीं आए भाई, तो जस्ट चपट 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 चपट। उठ के हम कब जा रहे? 15 तारीख को, 15th, 15 तारीख। वो ट्विच पे रेड कर रहा है यहाँ, तो जरूरत पड़ रही है। समझो मेरी बात, यू नो, समझ सकते हो तुम मेरी भावनाएं। 15 बूट कैम्प मैसेज पिन करो, कोई बात नहीं। टेंस या मॉडल? टेंस टेंस टेंस। भाई साहब फोटो में क्या मोटा लग रहा है, और तू कितना पतला हो गया है। तेरी फोटो में बहुत मोटा था। एग्जैक्टली रे प्रतीक, तू ही तो है भाई समझदार आदमी। इधर देखा कितना फैला है। और साहब मेरे को बोलता है कि तू खड़ा नहीं हो सकता कैमरा के सामने, जब इसलिए वो खड़ा नहीं हो सकता उसको। चलो ये नहीं बोलते, जाने तो, ये नहीं बोलते, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। Who the fuck is that guy? Model always. Your choice, man. Support whoever you want to support. Hello Vishal. Valorant Masters भी इंडिया में नहीं है शिनोबी। मैच कितने बजे? अभी जस्ट चालू होने वाला है। जस्ट I think it started. Let's go. Let's go.
Go motherfuckers. I believe, where they, they kind of bowed out fairly early. They lost to Immortals twice in both challenges. They've lost to Sentinels. They've lost to 100 Thieves. The only team they've really beaten challenges was NRG. But the good news for them is they played them to challenges events so far. This is still TSM's first run into an actual challenges main event. It's been a bit surprising, but with that in mind, taking a look, it's the same roster that we come to expect. So it's just been kind of भाई उसका स्वेटशर्ट ऊपर हो जाता है बाज खेलने में हाथ डालता है what the fuck chill मैच पे फोकस करो बहन चोदो हरामी लोगों 13-11 win, 11-13 loss, 7-13 loss. That's from the perspective of TSM. But then when they get through this next third open qualifier, it's pretty darn clean up until they place up against version 1, in which they went to an overtime on Ascent. And there's really no shame in that because that version 1 team was looking pretty good. But on the other side, for GenG, just to kind of talk briefly about them, they have been kind of once again ruining a lot of people's runs. They've taken down not just TSM, but also Cloud9 Blue. I mean, they've been through the gauntlet through each of these 3 kind of runs that they've put together for these Challengers events. And I feel like GenG are kind of like the gatekeeper team right now because they can stop teams like TSM from qualifying. They can stop teams like Cloud9 Blue and a bunch of other teams as well. They are pretty comfortably in some cases. I mean, maybe not versus TSM because that was a 2-1 result, but you have to start wondering where did TSM fall in terms of which half of GenG's fence here, because GenG seem to kind of struggle versus the better teams. We're looking at Sentinels, we're looking at the 100 Thieves, we're looking at the Immortals, right? These are teams that GenG have always kind of failed to try and overcome. But TSM right now, based on history, that last 2-1 result that we did see a couple challenges ago, or just one challenges ago, that's one that still stings for TSM, and that's one that GenG I think still holds GenG gusta must their favorability coming to this match today. Agreed. भाई डिस्क्रिप्शन एंड चैनल बैनर पे इंस्टाग्राम आईडी चेंज कर दे व्हाट बट एक सेकंड डिस्क्रिप्शन एंड चैनल बैनर करता हूँ एक टैब में श्राउड का वॉच पार्टी एक में विम ये हुई ना बात असली बंदा है रे तू GenG have yet to play on Split, at least here in the VCT era. So it leaves us with Bind, Ascent, and Icebox. Kevin, where's your head at for this first map? लीव ब्रो लीव भाई रिक गो स्टडी ब्रो नेट की वायर निकाल और पढ़ाई कर कल देख लेगा भाई तू ये GenG आफ्टर योर एग्जाम इसी क्यों नहीं खेल रहे क्योंकि नहीं खेल रहे Both teams kind of favor Icebox, pretty even map. I did feel like Ascent was going to end up being TSM spec. Then we were going to be left with Bind, but I expected Bind to maybe be, again, the third map. So going to Bind first. We're not going to see Icebox until a little bit later. Both teams have played a reasonable amount of Bind, I believe, just looking across the win rates. I guess, pretty similar, actually. About 78% on both ends. They both played 9 times, won 7, lost 2. So it's a very hello Varad, all good man, all good. How are you? This is a repeat essentially of what the series set looked like when GenG and TSM played up against each other. थर्ड मैप तक गया तो आई थिंक GenG will win. अगर TSM को जीतना है तो they have to win in 2 maps. That is my prediction. Hello Istiaq Ahmed, welcome bro. Because both of these teams, as we just mentioned, of course, playing with the same rosters that you would come to expect, but the compositions that they pull out are pretty unique and pretty different overall. Specifically, I'm kind of taking a look at TSM in recent memory, just kind of going back to the round of 128 and the round of 32 through their third qualifier. They're actually pulling out the sky here. Hello Aditya, this is best versus best. This is best. चलो जाने दो कोई बात नहीं बेस्ट वर्सेस बेस्ट तेरी भी खुशी हेलो तुषार तुम्हारा स्पोर्ट्स के आने वाले टूर्नामेंट्स के क्वालीफायर में डायरेक्ट इनवाइट मिलेगा या जरूर से शुरू करना पड़ेगा हम लोग को अगर इफ देयर इज अ टीएससी इनविटेशन आई थिंक वी विल गेट इनवाइट क्योंकि हम लोग का रोस्टर इज सेम जस्ट ऑर्ग इज डिफरेंट सो इन टर्म्स ऑफ दैट वी विल गेट इनवाइट ऑब्वियसली बट जहाँ पे क्वालिफाई रहेंगे जहाँ पे सब टीम 0 से शुरू करेगी वहाँ हमको भी 0 से शुरू करना पड़ेगा ना मेरे भाई Happy for you guys stick together big fan come back stronger yeah तुम्हारे लिए ही तो तुम जैसे लोगों के लिए ही भाई हमने let's go to अंकर दास तो सिनर्जी देख के ऐसे लगता है मुझे सिटी मैच स्टॉप ऑलरेडी मैन गो लाइव भाई सब रैप गॉड बने फिर रहे हैं मैच हेलो वेरिएबल हेलो बॉम्बर योदा
कितना भी बोलो तुम लोग एसेंट में बम किल तो ए होल्ड विम किंग है इजी रे ए पे इजी है standard, I would say, across a lot of the top teams that are out there. Really उसके अलावा कुछ नहीं आता भाई the Sky and the Killjoy. Where do you feel किसने तो बोला था गोपी का प्रोसीजर निकल दादा से मुरा कैसे that they're going to largely be able to get their reads पल चेंज Killjoy and Sky? माइंड चेंज Then you would come to figure when it तो हमने कन्विंस कर दिया यू नो Cypher and of course beyond that of course the Sova. ओ भाई Is this just one of those Sky. things that they're just looking to वो kind of टीम भाई by इस surprise, सोवा आउट ऑफ look मेटा to और व्हाट pull नाउ out raw क्या equity? सीन है भाई Something else kind of lingering in your mind as far as why this Sky is working for TSM. मैं अभी थोड़ी चैट कम पढ़ूंगा ऑब्वियसली मैच देखने हैं लेट्स सी मैच I was literally crying in the last match फिर I think for Sky where you can throw the Trailblazer and the guiding lights through the teleporters. It's kind of the general play here. It's starting to take over on this map. So I don't think I'm super surprised about the Sky for this particular map. I wouldn't be surprised if more teams were going to put. आई थिंक स्काई के फ्लैशेस की वजह से उसको ले रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है अभी Concern for me, or the main talking point for me, is still going to be Hayes. और ऑब्वियसली उसके फ्लैश के साथ इन्फो भी मिल जाती है फ्लैश का फ्लैश होता है इन्फो की इन्फो मिलती है Most teams would be हेलो जेट मेरे भाई Cypher here, but I don't know that Hayes has a Cypher. ब्रो वन क्वेश्चन प्लीज टेल मी व्हाट डिसीजन वाज टू स्टिक दिस लाइनअप अबे हुस इट्स एवरीवनस डिसीजन ना मेरे भाई लाइक On the other side, I mean, Kusta, मेरा guys like अपने Kusta, डिसीजन आप ही लेंगे ना हम लोग का खुद का डिसीजन खुद पर्सनल बंदे ही लेंगे ना ऑब्वियसली I don't think the Sky is really that weird on this particular map. I don't know how that's But gonna I think- GenG in terms of anything different that we're going to see, but Sky probably is. आई थिंक आई कैन से दैट अगर गोपी स्टिक नहीं मतलब आई थिंक गोपी वाज द मेन प्लेयर अगर वो नहीं होता तो हम लोग नहीं स्टिक करते लाइक काइंड ऑफ The team kind of coming at us here defensively, I believe, or overlay, just a touch backwards to represent that. There is the Trailblazer coming through first. Boom. घुस गए भाई घुस गई जेनजी Showers and Quinn will find first blood. Wardell has to fall back. So 4v5 straight away, and it's actually going to be the Rays gone, which is going to be a little bit more difficult for TSM. फिर क्या समुराई वालों ने खुश कर दिया ऐसी कोई बात नहीं है So you already see a rotation coming through. obviously from we are Kusta. This is gonna pleased. be a good response, a little bit of a कि हम लोग को इतनी जल्दी और मिल गई बूट कैंप एवरीथिंग इज वेल सेटल्ड नाउ being placed by Kusta as well, just kind of lurking. एलजेल कौन है भगवान है भाई भगवान From TSM. गॉड Gonna be some ऊपर से जो आवाज आएगी Shells. And then here comes the hit. Win using the guiding light to free themselves forward, but did not actually get any clearance towards this quad stack box. Cutler able to find one more. ओके ट्रेड्स हैपनिंग सबरोजा The 2v2 situation. Sabrosa still. ओह जीएमटी ने हक दिया Oh my goodness! However, did GMT miss that shot? It will be traded back, but it comes at a pretty steep cost as Kust is down to GMT ने 8 थोड़ा- for a 1v1. थोड़ा सा हक Spike दिया still currently down, but a spy cam is there to help him work this maybe a little bit more freely, and that should result in an opportunity for him to potentially get this spike planted. Just comes doesn't trust down it. to जेनजी लग रही है जीते now that plant does come through. पहला राउंड है सबर करो आई थिंक अगर टीएसएम को जीता उनको दो मैप में जीतना पड़ेगा देयर इज नो वे The spy cam deleted. कि वो 1v1. No armor for Hayes. The Oh! headshot would do it, and Kusta finds it on cue. GenG take the pistol. ओके Oh, no. ओके That was a really intense one. आई थिंक एज ने अच्छा खेला 1v1 बट देन They had yeah, no help Kusta left. was just One shot from Hayes would have done it. Both players know exactly where the चाटा other is. चप्पल मार दी उसको मुंह पे Swing happens. Who decides to swing where? Bit of a 50-50 there. Ends up being that, I mean, both crosshairs kind of line up there. It comes down to Kusta pulling the trigger just a little bit earlier, landing the headshot required, and Hayes, I don't know, man, is it the reaction times? Not too sure what it was. Just needed the one shot. Couldn't find it, and Kusta and GenG will take down that pistol as we head into round number 2 now. No Force Spies, no Stingers. We're on the new patch. Not quite onto the Astra patch as we know. That's 2.03, not 204 currently. Quinn onto Drone straight away. That's Drone's second first-blooded death in a row. Yeah, it seems like TSM saying, all right, if they want to put a lot of effort through showers, let's just take a look over towards B long. And, well, that look gets instantly punished. So, a very early 4v5 situation that TSM... भैया गुस्टा Two Cutler also will be tagged up. क्या ही प्लेयर है सीजन में मुश्किल था तब यहाँ भी मुश्किल हाँ Kusta just lurking over इंटरेस्टिंग मैचअप We'll have a dark Very to play interesting. with. Sean to the middle. Nice shots there. Able to take down Hayes, and we've got a very comfortable 5v3 for GenG. टीएसएम को हवन करवाना पड़ेगा बंदे TSM on this pistol, I mean, they would Oh. need to be stacking over towards be really Cutler high. bhai. Get a single kill so far. It's down Sabrosa. 8 Oh, HP, let's go. find a tap. One more, baby. That's not bad in terms of at least dropping one gun. हल्का हल्का More हल्का coming हल्का through सा Wardell, though, the last player alive for TSM. आप लोग बुटकैम्प से प्लीज व्लॉग बनाओ इफ पॉसिबल आप गोपी रक्षी बहुत फनी वीडियो बनाएंगे यस 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 वी विल डू दैट Important here. The question will be with अभी यू का एक चल रहा था मैच मैंने देखा ये सिंगल डुलिस्ट मेटा क्या है भाई वो लोग जीरो डुलिस्ट मेटा भी खेल रहे हैं 3 टीम्स है एनआईपी एफपीएक्स एंड फैनेटिक जो डुलिस्ट खिलाता ही नहीं है एसेंट और एक दो मैप में They're playing like CSGO. Proper. Maybe try to play for exits.
maybe just try to find a timing to sneak his way into the site, but माउस पैड कौन सा है? HyperX Fury. pretty comfortable around. So taking a look, I know the poll has gone out. 61% of people believing that TSM will win this first map. Not the greatest start for मेरे को Valorant. कॉम्स मांगता. Still plenty of time to work with, and you will see Wardell try to move on in. Just make sure he could safely get himself off the board, and we'll go into round 3 with what will likely be a TSM gun rank. Gonna clean as well. GenG minimal losses there. They get to keep most of their upgraded guns. Drop over the Bulldog over to Yimond. That means Sean's मैं कल CSGO वाला है क्या? Yes. rifle potentially. No, just the Bucky for now. तू कहाँ से जानता है भाई इसको? ये tier 3 टीम में था नॉर्थ अमेरिका की. ये पूरी टीम ही थी, लाइक GMD, मैकेल, विन और जो इन दो लोग को निकाला था लोग ने, FE एंड प्लेयर 1. इनका नाम था डिस्ट्रिक्ट 7 या फिर डिस्ट्रिक्ट 9. डिस्ट्रिक्ट 7 था. 9 तो इंडिया वाली है. Which is better, Esther or Roman? अभी कुछ बोल नहीं सकते रे विशाल. It's too early to say anything. Oh. Oh. Oh no 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 no, not like this. Not like this. वो लोगों ने TP भी मरवा ली रे एक बंदे को और इन लोग की ये GMD कुछ ज़्यादा ही डर गया. देख अगर ये यहाँ से चला जाता, बिकॉज 2 बंदे थे, इसने 1-on-1 फाइट मिलती. अगर कोई रहता भी तो एक और बंदा, बट उसने जब TP मारी आई थिंक क्लियर कटता कि यहाँ पे कोई नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि या इट वाज क्लियर कि जब जैसी TP मारी तो लेना चाहिए था ये शॉट. यहाँ फाइट लेके क्या मतलब? 3-on-1 4-on-1 फाइट लेके क्या जीतेगा वो? Seconds of just checking cameras and trying to spam into this wall. Hoping, praying. कोई Valorant अपडेट ना दे है? And Kusta will be able to collect the spike, actually exchange his specters for one that. बेटा वगैरह तुम लोग प्रैक्टिस करना अनप्रेडिक्टेड. ठीक है भाई प्रतीक भाई. TSM get aggressive defensively this time, and it pays off in a major way as they only drop 2. सब टेलीपोर्ट में पार्टी कर रहे. आप लोग बूटकैम्प कब जाओगे? 15-16 15-16. क्या आवाज थी वो? Weapons alive going to round number 4. This is going to be the first gun round properly for GenG though. Bring this one back into play. Huindo still only with the judge. Yeah, oh judge, and well, Sean finding first blood on Wardell. Oh shit. Oh shit. It feels like this is going to be one of those aggressive hits from GenG where they just kind of use a smoke execute, get win in there, and see if the judge can lay down the law for them. Here comes the oh shit. शर्मा जी कैसे हो? ऐसी वस्तु गेले उन्हें तो डुलिश खिलाना ही पड़ेगा. Exactly. Can't play no duelist, bro. Maybe we might play one duelist. हम थोड़ा इंस्टाग्राम को जिंदा कर रहे. क्या डालूं रे भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा. अपनी फोटो डालना चालू कर दूं क्या? ठीक है भाई. समझ नहीं आ रहा क्या डालूं. मैं जितना सोच सकता हूँ कर सकता हूँ कर रहा हूँ मैं. इंस्टा प्रमोट कर रहे. आप प्रमोट करो भाई. सेक्स की डाल दे. क्लचेस डाल भाई. इधर यूट्यूब के शॉर्ट्स मेरे से बन नहीं रहे, तुम लोग बोल रहे क्लचेस डाल. That's how they basically take full control over A. I mean, they sacrifice Win, but I think that's a free death anyway because Win only did have a judge. XCZ वाली तो हटा दे. हाँ हटाता हूँ, वो हटाता हूँ. Having some very concentrated aggression post smoke fading. And the rest of TSM arriving a little bit later to the party, being locked out by the camera plus smokes plus running out of time. अरे शाहरुख खान फोटो डालने नहीं बोला, क्लच की वीडियोस वगैरह डाल. ये भाई तो भरो भरो सब. इंडिया में आज की डेट में बजना सबसे फ्री है. बजो, सब बज रहे हैं, तुम भी बजो. भाई मॉड कहाँ है? होगा सब मिलेगा. चाय कैसे बनती है वो डाल. चाय के साथ डालूंगा, चाय को बोलूंगा चाय बना और फिर उसकी वीडियो डालेंगे. ओ ये लोग घुस गए. ये बिलोंग से घुसे ही नहीं भाई.
to be a little bit more controlled, and well, they actually control themselves by Hello, staying on drone. top of one another as Hello, GenG is able hello, to drone. Vlad in a flawless defensive round for TSM. फ्रिज की फोटो डालो. Extreme coming through Hayes to be opening up with two. He gets the opening kill to Sean and to Hookah. No one else coming through from Hookah. डालता हूँ भाई, डालता. Lining up players, the rest of the four coming through from GenG and towards B Long. Perfect for TSM to pick up all 5 kills. Flawless here as well. एक डाल की चुप रे पार, चुप रे, तू चुप रे. हेस बोलते भाई, हेस ऑलमोस्ट डुबाता था, ऑलमोस्ट डुबाते डुबाते बचा है. अगर वो गलती से इसको जेट मार देता यहाँ पे तो ये दोनों नंगे हो जाते, रेज और स्काई. An important one here in round number 6. Showstopper, neural theft available for GenG. Showstopper will also be retained here for TSM. Sabrosa was trying to take a little passive peek over towards A Showers. He gets tagged by Stycam and has to forfeit, which will lead to an opportunity for GenG to soak up the ultimate orb and maybe. बड़े लोग वैसे फोटो कम डालते हैं बिना पैसे, ये तो बिल्कुल नहीं. What the fuck? तेरे चैनल पे जो हो जाए कहीं नहीं, इसलिए यहाँ बचने का बच, वही तो एग्जैक्टली. Now they might start thinking about throwing a little bit more utility. Cutler's going to confirm people are down long, just shoulder peeking that one. मैं जस्ट ध्यान दे रहा हूँ कि स्काई कैसे खेल रहा है, क्योंकि देखना चाहता हूँ. Yeah, it's still around the 50-ish kind of second mark here, and ESM don't quite know what GenG are going to do. You do see one rotation, Oh, the drone is coming what? over and pushes down. That's a big first blood for Wardell. The spike and all of this passive. Not like this. Not like this. हमारे भाई GMT को बोलो not like this. You have to really consider what exactly do you want to do. You don't want to just give up this round, but at the same point, how much do you spend? Candid डाल. Hayes next one up finds the kill that's on the spike carrier. Nanostorm to keep it safe, and now you're all of a sudden for GenG in a position where you're just trying to fight for a couple of kills and maybe keep Michael. भाई के साथ रील्स डालना भूल गेम जाने के बाद फोटो डाल, अच्छे से खींच ले, फीमेल फॉलोअर्स भी आएंगे. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. समुराई स्पोर्ट्स से खेल रहा है. यस, सबरजा को ड्यूलिस्ट क्यों नहीं खिलाते ये? मर्जी भाई, उनकी टीम, देयर थॉट्स, देयर प्लान्स. And then for TSM as well, I mean, easily held most of the locations. Yeah, they dropped 2 eventually. 2 महीने पहले तक अगर तुम रैंकिंग के हिसाब से जाओगे तो अगर जैसे अगर NA 90 पे थी और यूरोप 70 पे थी, तो अभी NA 95 तक ही पहुंची है, लेकिन यूरोप 85 तक आ गई है, मतलब 80-85. यूरोप का गेम प्ले काफी स्ट्रांग हो गया है. मैं आज देख रहा था उन लोगों के कोई टीम्स के मैचेस. Fucking godlike. TSM all using Phantom, but why? Because it's more reliable. Welcome to the better side. Oh. Not. Wee, wee. Oh. 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 Are you kidding? This keeps the GenG offense alive. Just comes down to can they successfully fully clear out Sabrosa, who has been eluding all of this. अरे रे 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 रे, आवाज आ गई, केज में आवाज आ गई. Him and now TSM with the Seekers looking to retake into 2v4. समुराई सैलरी सुपर चैट करे. Where is this broadcasting Twitch? Yes, Dimitri. अभी भी चल रहे हैं यूके मैचेस वैलोरेंट के चैनल पे. हेलो अमन. The lockdown will be in play. GenG has to make a move. Mikhail finds one, goes to 1v1 and ओ भाई, आई थिंक कटलर ने काफी ज्यादा गंदा खेला ये राउंड. इसको जाने की जरूरत ही नहीं थी. प्ले बनाना था तो मिकेल को बनाना था, क्योंकि उसने अल्ट यूज की थी डिफेंडर्स ने. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई कटलर इतना भागा. मे बी वाज कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो. हाउ आर यू रॉबिन भाई? हाउ आर यू माय फ्रेंड? Down to 1v1 after, pretty much a force as you identified there. We're looking at 3 light armors, 1 SMG as well, 2 ultimates. Sean's at least got a showstop, which could be pretty useful here. Taking some early controls over towards Showers as expected from Deep angle, like normal है ये. straight away aggression. ये काफी नॉर्मल चीज है. Let's see if Iman maybe takes a hook line and sinker here with Wardell, can just reel in this opening kill. And this is the next obstacle for GenG.
When you've got Wardell on the table, he will reveal that the operator is in play. Does that change what GenG wants to do here? You know that he played aggressively towards A. Does that जैसे ही influence you to जैसे ही जीएमडी ने ये स्मोक डाला ना, आई थिंक इन लोगों को पता चल चुका है कि दे आर जस्ट डिफॉल्टिंग. अभी ये लोग जितने नेट्स बचा सकते हैं उतने बचाओ. डोंट यूज इट लाइक फालतू के लिए, यू नो, बिकॉज दे काइंड ऑफ नो नाउ कि ये दे आर जस्ट डिफॉल्टिंग. basically been defaulting, you know, they've been getting info into जैसे ही मैंने खोला, यू नो, इसने भी बोला दे आर जस्ट डिफॉल्टिंग. इन्फो मिल गई है कि लोग है. Dell's now there to check for anyone potentially peeking. They know operators on the map, so I think GenG are going to take this one a little slower. So got a couple flashes available. मैच की इंटेंसिटी में दिमाग नहीं चलता. अबे ऐसा कुछ नहीं है. Oh, Sabrosa, Ooh. I mean, he hadn't been spamming through that dark cover much at all, and then when he chooses to, he walks गया. the kill. Wardell, another, the showstopper for कटलर मरने गया. पता है तुमको? एक्चुअली पता है क्या? कटलर वाज लाइक ओके फक इट, मैं अगर इफ आई डाई आई डाई, क्योंकि उसकी आई थिंक 60 एचपी थी, तो उसने बोला यू नो इफ रिजल्ट मार दिया तो अच्छा है, बट अगर मैं मर गया तो मर गया. इट्स ओके. आई एम ब्रेव वॉरियर. वॉरियर बन के गया बिल्कुल. डिफॉल्टिंग. भाई आपने मुझे अपना फ्रेंड बोल दिया, धन्यवाद. डिफॉल्टिंग मतलब क्या? लाइक नॉट कमिटिंग एनीवेयर. जैसे ओमन यहाँ बैठ के जस्ट ए शॉट पुश देख रहा था, साइफर ए लॉन्ग पुश देख रहा था, दो लोग बी लॉन्ग वर्क कर रहे थे, एक हुक्का पुश देख रहा था, यू नो, मतलब सब लोग अपना अपना पुश मार्क कर रहे हैं बेसिकली. या आई कैन से दैट, पुश मार्क कर रहे हैं. आईजीएल तो सबरोजा है. नहीं, आईजीएल कटलर है. दिस गाय द स्काई. क्या एंगल है रे. गॉड रे, गॉड एंगल रे. स्काई वर्सेस स्काई एक्शन. इसको सांस नहीं लेने दी है भाई कटलर ने. ओह शी. बुटकैम्प का क्या सीन है? 15 तारीख को जा रहे हैं. मैंने इंस्टा पे बुटकैम्प की फोटो भी डाली हुई है. आज हम लोग साय से मिले, वो भी डाला है. यू नो, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा फॉर दैट. सुबह को यूज क्यों नहीं करते बाइंड में? डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम ब्रो. Didn't get to see too much action in the particular last round. He's hanging out over towards A, no one pushing him. Now he's going to be starting out over towards B, and he'll be looking for potentially Mikhail running up, because Mikhail again has been defaulting towards B for most rounds. Lace on, there you go, has been popped. They're confirming information over towards B. I don't know that the guiding light did find anything coming through from Cutler though. Oh, Paranoia pushed through for TSM, but the Trailblazer does connect, so that'll stop Sabrosa just a touch, and beyond that, GenG never fully committed to getting into the showers. So a bit of early utility exchange between both squads, but no first bloods, no point of contact beyond it. And this kind of slow playstyle does get punished by Wardell pretty hard. So now you've got him looking over towards B Hookah, just destroying the the tripwire and stuff like that. But GenG are definitely kind of faking towards B, and eventually, yeah, here we go. Wardell kind of just gets bored of B, move over towards A. Probably first eyes towards shower as well. That would be huge. Drone's already got the off angle covered. So कब स्काई के कुत्ते के GenG as Seekers do roll. Start cover. There goes the tailwind and nearly Ooh. empty with the blazer, but does find one instantly. सबरोजा Tested. बचा लिया भाई, बचा लिया. इनसेन बचाया उसने, नहीं तो अभी हार जाती टीएसएम राउंड. Beyond the quad box. कंफर्म हारती थी. बचा लिया सबरोजा ने. GenG in a bit of a corner. Mikhail's considering the plant, but as he wide swings, will find a couple more kills, and that will be a much more secured plant in the mix for GenG. 2v3 in the retake. Seekers are out immediately. Cutler trying to get some information, but डाल तेरा टरेट है. now point of contact on the outer. Cutler good for one. Kusta responds, and Kusta gets two at the end. टरेट है भाई, यूज कर. A dicier retake attempt. गेम सही करिए. फाइट ले रही है उनके एडवांटेज पे. Picked up the operator here. I mean, giving that one over to Huyn. I don't know. Interesting that we don't see a lot of offensive operators anymore on a lot of maps. This will be दीवार की फोटो डाल के बोल रहा है बुटकैम्प की डाली है. कौन सा नशा किया शर्मा मेरे भाई? वो बूटकैम्प पे ही है हम लोग मेरे भाई. शर्मा मेरे भाई, दैट इज आवर बूटकैम्प. अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बना नहीं है, फर्नीचर आया नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या करूं बता. दीवार ही दिखेगी तुझे. व्हाट द फक. 100 वैसे टीएसएम फुल पैसा वसूल. अभी 100 थीव्स का ठीक है. टीएसएम इज नॉट अप टू दैट, यू नो, दैट मार्क राइट नाउ. नॉट पैसा वसूल मैच है 100 थीव्स वर्सेस सेंटिनल. दोनों फुल बीफिंग चल रही है.
VM चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मैच तो वो है देखने लायक। समुराई उसका होना कौन है? समुराई because you put so much trust at Wardell. If there is a late rotation, he will find maybe one pick or at least see numbers before he has to tailwind away. मेरे बचपन की फोटो है डॉक्टर चोको। ये हर राउंड वो शॉट लेके बैठा हुआ है बे। Over towards the B site. And that will be enough for TSM to be in a very comfortable position here in round 11 at a 5v3. That's win with an operator as well. So Hayes actually beats win in that 1v1, which is absolutely massive. हेस्ट को सिटी चला जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए बेसिकली। एल्बो जाके बैठ जा। Just go elbow and hide, you know? You have an ult. But I mean, this is not looking great. 5 versus 3 showstopper here from The fuck? and this is just going to slow things down even further. The fact he gets a kill, Hayes gets another one as well, and we're just down to Gimon, and I don't think he's going to do much more. He's stuck in a corner, does find मारा रे एक। elimination, not bad, but it's not really going to amount to much. as बिजनेस है मेरे भाई रॉबिन। last round of the half and the only thing spent for पता है TSM. मुझे मजाक कर कितना You have no शर्मा जी GG, so a big advantage Down for Monday TSM best to shot. close out this half. And that's Where actually is the a stream on decent Twitch? change for GenG. You know, previously when I was watching the GenG games, one of the criticisms I had of this team was that they were very much holding on to ultimates. They weren't willing to use. पर TSM तो नंबर 2 है ना अबे एनए की रैंकिंग्स में। भाई ऋषित तो 6 महीने पहले की बात कर रहा है मेरे भाई। They are not now. तुम खेल रहे हो? नहीं भाई मैं नहीं खेल देख रहा हूँ। यस Well, Mikhail will be freed I up. sometimes feel that Envy is better than Sentinels. Turned off this ultimate They over might the be. showers. So at least there's one tool to use. ये साला जज लेके भाग डैश पे डैश मारी जा रहा है। Get the Seekers in play and follow up behind it. ओ सोचो अगर ये वॉक इन कर देता 2 फ्री That's किल। gonna be Seekers with a guiding light and then a tailwind play for Hwin to try to find first blood again. He'll just be left to lurk so far in the smoke. No one from TSM. ये अल्ट पे खेल रहा है। अल्ट का सेटअप लगा के खेल रहे हैं ये लोग। ये लाइक जो भी है ये दोनों जो गिलजा के पास अल्ट है स्काई जस्ट गिविंग हिम बैकअप। बाकी 3 ए पे साइड से खेल रहे हैं 3 ए पे। ड्यूअल छोड़ेंगे नहीं और जेट डैश मार देगा 1 किल पे ए पे आए तो। आई थिंक ये अल्ट पे इसको हाँ ओके ना मैं उसने अल्ट मार ही दी। ये अल्ट पे उसको पता भी चल जाना चाहिए था जब जैसी जिन अल्ट मारी की दे आर प्लेइंग एल्बो क्योंकि इनका ये जो टेक्टर था बेसिकली वो डायरेक्ट गया डैश मार दिया। Is he gonna be able to respond to this? He's actually Sabrosa has helped for first elimination. The quick Oh. not gonna be there, but Sabrosa through lamps is good for not just 2 but 3. It's too fucking good. Holding his life, the defense rotating over, and GenG are just down to 2. Kusta lingering over by B will fall, and now time becoming a problem. 10 seconds. Win what would be a 1v4 situation. Has to try to stick for a plant, and as he does, What the hell? makes the wrap, finds the 7th round Shut for up. TSM. And we go to our halftime break. TSM in a very strong spot as they'll rotate back over and be on the offense. We come back after this. ऑफिशियल टूर्नामेंट में स्किन बैन कर सकते हैं क्योंकि रूमर्स है कि स्किन से एडवांटेज है। कैसे बैन करेंगे? इफ दे बैन स्किन्स का मार्केट कितना बड़ा मार्केट है राइट का। देन शुड हायर बेटर प्लेयर्स इतनी अच्छी और क्या सही है बिल्कुल। C9 गोपी कहाँ है? आएगा C9 गोपी पे आएगा सब आएंगे भाई। जिन लोग ने मेरी वीडियो को देखनी थी बुट कैंप की फोटो या आप लोग की फोटो आज साय के साथ मिला था तो यू नो कैन गो एंड सी ऑन माय इंस्टा स्टोरी बिफोर इट्स गॉन। हेलो स्पंकी खेल सकते ना कॉम्प। हेलो मिस्टर ने किस्म का टीम प्ले बेकार है क्या पता। स्ट्रीमर व्लॉग कर रहा था यस आज व्लॉग कर रहा था पता नहीं कब रिलीज करेगा वो मुझे आइडिया नहीं है बट वो आज व्लॉग तो डेफिनेटली कर रहा था। हेलो विम पियर टू इरिटेट आई नो ऑफ कोर्स आई नो
सबरोजा वर्सेस जेनजी। सबरोजा इज क्रिस गेल आई थिंक। सबरोजा उनकी टीम का क्रिस गेल है क्या? लेकिन वो ओमन खेलता है, हमारा वाला चील चील की तरह उड़ता है, यू नो। फोटो में हर्ष कहाँ है? बुटकेम वाली में निकाल दिया रे उसको। What happened between you? कुछ नहीं हुआ नहीं यार, nothing happened. Are you the IGL? No. 7-5 after the half in favor of TSM. Avril, give me your initial reactions. Sub Rosa massive. I mean, it's just not just the 15 kills that we see on the board, 15-8, highest score so far for both teams. But how many times does Sub Rosa kind of just save TSM, or maybe not save TSM, but it's just kind of the hero TSM on particular rounds? GenG will be starting their pistol with a little bit of early aggression down. Short sees nothing for now, but they have no information towards showers. So let's see what GenG can do with this type of information. Contact should be found pretty quickly onto market. It's Jet on Jet and Wardell. I think ये नहीं करना चाहिए था, ये तोड़ना नहीं चाहिए था, इसको फ्री किल मिलता था विन को। Speaking of heads, able to find himself the first headshot to keep things in a 4v4. Command is also here to try to assist on this hole. Oh. And as we get a little dicey, goodness gracious. Thought for a second Sean got both with the snapper, but it's Command. ये चमका राउंड था थ्रो। We've got ourselves a 4v2 early. Kusta. व्लॉग आएगा बुटकैम्प का, यस। कैप्टन कौन है टीम का? सिमर साइड से ठीक। Take the second pistol. Well responded there. Sean coming through with 3 as well, and that's despite TSM getting the initial pick via Wardell, who was really low, coming back through showers. TSM going to drop both pistols so far. A bind. GenG should be looking forward to a really comfortable anti-eco here again. मुझे फीलिंग आ रही है टीएसएम जीतेगी ये मैच। Go towards it, 4 spies. Shout out to you मेरे भाई आदित्य। Shout out. तुम शॉर को तुमको बोल वो हक हुआ। अगो अगो। ये दारू पीने आना ब्रो। सुनना मेरी बात बुलेट, कल अच्छा नहीं किया जो तू छोड़ के भागा है ना, और जो भाग के खुद तो गया और अपने साथ जो लोगों को लेके गया ना, भूलूंगा नहीं मैं। तू टेंशन मत ले, तू कितना भी कर, मैं भूलने नहीं वाला ये चीज। हेलो अक्षत, बेस्ट प्लेयर इंडिया। भगवान भाई भगवान, गॉड इज द बेस्ट। टिम भाई ने मोंटा डाला ऑफ स्ट्रीम, देखना इंस्टा कर दिया, देखता हूँ देखता हूँ। Finds himself 4. Trailblazer will give him the information. Do you give him the ace? Apparently not, says Squid. गोवा का प्लान कर रहा था ब्रो। कर कर तू गोवा का प्लान कर, जिसका प्लान करना है कर। माफ नहीं करूंगा लेकिन मैं, कोई बात नहीं। पैंचा तू बोलता है तू आईजीएल नहीं है, चाहे बोलता है वो नहीं है, रेक्स बोलता है वो नहीं है, तो क्यों अपोनेंट से कॉल लेते हो? अब ये हुई ना बात जो तूने लास्ट लाइन लिखी। I change my username Sonic. Okay, Sonic. Okay. Hello Boruto. Acabo sabiendo. ये हुई ना बात रे यूके। TSM should win this round, but I don't know. What I don't know. Anything can happen. Still playing inside showers for now. That does include the spike carrier. Ultimate orb will be collected by drone. Are they going back? देखो ये डिफॉल्ट था, दिस वाज लाइक यू कैन से ए हैवी डिफॉल्ट, जिसमें वॉडल भाई हमारे ए शॉट पुश मार्क कर रहे थे पैसिवली। सबरोजा ये लाइक हुक्का और ये बिलोंग काइंड ऑफ पैसिवली देख रहा था, एकदम पैसिवली। और ए लोंग पे अगर कोई पुश होता तो ये लोग फाइट करते थे, क्योंकि ये लोग 3 लोग थे। और ऑर्ब लिया, अभी प्लान चेंज हो गया आई थिंक। दे आर गोइंग to go B, like the end game is B I think। और ये लोग जस्ट किलजॉय जितना फेक कर सकता है करेगा, और ये जेट भी होने वाला है रोटेट। आई थिंक शुड रोटेट नाउ, आई थिंक मेरे हिसाब से। ओह दे आर गोइंग बैक टू ए, नेवर माइंड। ये एक्चुअली ये फेक कर रहे थे लाइक बी पे जाके, लाइक किसने पुश किया होगा तो उसको पुश बैक करने के लिए, बट ये भाई हमारा ढीठ बैठा हुआ है, इसको पता है विन हैज ऑल द इन्फो, और ये लोग का भी कमिटमेंट हो गया। Oh no. Gets there for the showstopper, and it's left the drone for a 1v2. He's going to try to quickly rotate through the teleporter and get this spike planted, but there are players around. I don't know, बोलता है सब कंट्रोवर्सी वाली बातें खत्म हो जाती है। हो गया मेरा।
बैंकॉक टूर इनकमिंग। क्या बोल रहा है? सब स्कैम है ये लोग, टॉक्स में नहीं आने का। What? तूने माउस पैड कितने में लिया? 2000 में। Kushta OP. Moments so far on this map. You have to look over towards the attacking side as well. How many, 1v1s, how many clutch situations where it came down to very small numbers. You actually had Kushta kind of win here. He's like solo over. And we पे TP मारी किया। Somehow Kushta ने 5v2 करके दिया था and they still died, like a lot of them. GenG guys. Kushta बोलते हैं exactly। देखो रे, इसने 3 मार दिए रे, और चौथे को भी इसने हाफ, देखो 72 HP। Why? कौन था वो मन? Why is he doing that? Yeah, low sensitive वाला mouse pad. HyperX Fury. ये राउंड TSM कैसे आ रही भाई? ये राउंड कैसे आ रही? मतलब कुश्ता ने 3 मारे, 5v2 क्या जीतते थे? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जेंजी वाले के इतने सारे मर कैसे गए साले कुश्ता ने 3 मारने के बाद? ओ अपने बंदे को चमका दिए। ये कहाँ देख रहा है? ट्विच पे नेक्स्ट टूर्नामेंट पता नहीं। फाइनली बुट कैंप देख के ऐसे लगा खाली तो खाली, बट दिखा तो सही। व्हाट द फक? बेस्ट इंडियन सेंटिनल। गॉड ऊपर वाला। माउस पर स्पीड HyperX फ्यूरी है भाई, अब स्पीड ही है आई थिंक, कंट्रोल नहीं। आई थिंक या स्पीड। लेट्स गो GMD। ओह कैसे मार रहा है ये? इन्फो भी दे दिया, अभी इन्फो दे चुका है वो। वेट, ये पहुंच पाएगा? वेट व्हाट? कैन वॉडल प्लांट? Yeah, he can plant. Why Arshan Rex not streaming? When will Blackhawk stream? Blackhawk will stream in bootcamp. Rex का OBS का इशू है और नेट का भी इशू है। हर्ष का तो कुछ पता ही नहीं है भाई मुझे। I'm back just a little bit. Welcome back, Click. मेरा माउस पैड स्पीड है। ये चैलेंजर सीरीज इंडिया में कब होगी? We already have much more bigger tournaments. We don't need challenger series, you know. But yeah, अच्छा होगा अगर होगी तो, लाइक एक ऑफिशियली रायट से होगा कोई टूर्नामेंट। बहुत जल्दी होगा आई थिंक, बहुत जल्दी होगा। डोंट वरी। राइट वालों को बोलो सेंटिनल निकाले, परेशान हो गए। अबे निकाले नहीं, जो लोग ने नर्फ किया था उसको रिवर्स कर दो वापस। लाइक लेट्स गो बैक टू फकिंग बैटल साइफर एंड बैटल किल जॉय। आई एम रेडी। ये साले आते हैं ट्रिपल ड्यूलिस्ट लेके माइंड फक कर देते हैं। Not just marginally, in a pretty major way. It undoes the round previous, because you got to remember as well. Is this Boomball going to get destroyed? Not quite. That's a lot of damage being confirmed. Excuse me? Do you choose me? What the fuck? Hello? Undoes that kind of round that came through for GenG. So, in my opinion, we kind of. Is this NSG officially by right? Yes. TSM won the 3rd round, then GenG come back in the 4th round. It's still. इस अपराध तो अर्जेजा खेल रहा है exactly. How the round should have gone. Still pretty insane how both those rounds kind of panned out in terms of who we thought was going to win, who actually won it. क्या था ये? Hello? Not only have guns, but they have the ultimates as well. Remember, we were waiting for timings with TSM. Sabrosa already looking forward from the shadows, goes all the way towards lane. लाइक करो रे हराम खोरो, लाइक करो, स्ट्रीम को लाइक करो, मेरे को इंस्टा पे फॉलो करो। हंस रहे हो? लेट्स गो 200 लाइक्स एंड फॉलोअर्स भी 400 तक। लेट्स गो।
sent out, not going to find anything. He's going to allow the spike to be planted, wait for a bit of help. Ay. Finds one elimination. Oh no. But yeah, I think TSM won this round. It's 9-8. GenG के पैसे के L लगे हुए हैं. आई थिंक TSM काफी अच्छा खेल रही है. लास्ट टाइम में थोड़ा डर रहे थे, थोड़ा सोच रहे थे, बहुत मतलब सोच रहे थे इन कि ओवरथिंक कर रहे थे. इस बार दे आर रेडी. दे आर लाइक वी आर जस्ट बेटर. लेट्स गो. लेट्स प्ले लाइक दैट ओनली. सबरोजा फाइट्स ले रहा है, वॉडल फाइट्स ले रहा है, ड्रोन फाइट्स ले रहा है. ए भाई मत लो रे फाइट्स. मैं क्यों बोलता हूँ रे. ओ वो 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 वेरी विश्वास. आई थिंक इस हो गया बेचारा. Cutler swings for huge damage. It looked like it was going to be massive. It looked like it was going to be GenG getting the defuse. They had cleared out Lamb. Sean was getting a lot of kills. Whoa. Versus one, but Cutler had time on his side. I mean, accurately called it. I was even thinking maybe time was going to बचा लिया भाई. 10 seconds prior to that. चड्डी बचा ली. कटलर भाई ने चड्डी बचा ली. अगर ये राउंड थ्रो होता तो इतने टिल्ट होते थे ना TSM वाले. आई थिंक टिल्ट पे ही हार जाते ये लोग. बट अब जेंजी टिल्ट हो गया और इन लोग फुल कॉन्फिडेंस. ये देखो बॉटल क्या शॉट ले रहा है. Coming back, and now in this particular round, at least a 1-for-1 trade. Sean finds the long range sheriff, and that's decent. And that's the Blade Storm that's also off the table for GenG on this pistol upgrade round. Instant denial. तुम्हें PC समुराई देगा. yes, like not at home but like at boot camp. yes. I think in most circumstances you would expect it to go the opposite. An exchange of Trailblazers. Looks like Mikhail has avoided his successfully. Sabroza playing shoulders. Will you miss your brother in boot camp? भाई मेरा घर is like 20 minutes in two wheelers. like बाइक पे जाऊंगा तो 20 मिनट में आ जाता है मेरा घर. 15 मिनट में. Don't worry. इतना पर्सनल टेंशन मत लो. चिल कर भाई. सबरोजा गलत मार रहा है. वो ब्लाइंड था. हमको नहीं दिखा बट वो पूरा ब्लाइंड था. पूरा भंड था वो वहाँ पे वो पर्टिकुलर एरिया में. चिल कर रहे प्रतीक. चिल रे. इंडिया में राइट ऑफिशियली आई है क्या. ऑफिशियल मतलब टूर्नामेंट से दे आर ऑफिशियल लाइक इन कांटेक्ट ऑब्वियसली बट नॉट टूर्नामेंट वाइज. ओ भाई यू आर अमेजिंग अश्विन भाई. थैंक यू सो मच फॉर 400. कैसे हो भाई. थैंक यू वेरी मच फॉर द 400. भाई अश्विन ओपी. लेट्स गो गाइस. अश्विन ओपी नहीं करेगा मिस. टेंशन नहीं है. थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच फॉर द 400. योर फेवरेट टीम. आप बहुत सारी है. यू में 2 है. ने में भी है. विजन स्ट्राइकर्स बोल सकते हैं. मेरा भी मोन्टाज आएगा सिल्वर गोल्ड वाला. वो देखना जरूर. व्हाई नॉट. मेरे भी अलग नशे सो के उठ के आपकी स्ट्रीम चालू. लेट्स गो. मुंबई में बुट कैंप है अभी. मुंबई में हमें. इट्स इन मुंबई. राइट कोपर राइट. कीबोर्ड अच्छा सा रिकमेंड कर दे अगर. एक सेकंड. ओके चल रहे हैं ना स्ट्रीम. ठीक है. ज्वाइन बटन कब. ज्वाइन बटन के लिए मैं क्या नहीं कर रहा हूँ. जो रेगुलर देखते हैं उनको पता है मैं क्या नहीं कर रहा हूँ. ज्वाइन बटन के लिए बहुत इससे ज्यादा मैं नहीं तड़प सकता. समझ रहे हो क्या तुम. थोड़ा समझो. मेरी चैट मत पढ़. लिखा भाई. तू बुट कैंप गया तो तेरा पीछे तेरे भाई का भाई भी लाइक भैया मोच कर. यस ऑफ कोर्स. पूरे पीसी की माँ बहन एक कर देगा ऑफ. इट व्हाट. चल रही है भाई. स्ट्रीम चल रही है. मेरे को डराओ मत. कीबोर्ड अच्छा सा. वही बोल रहा हूँ. अगर बजट कम है तो स्ट्रीम चल रही है ना. लैग हुआ था थोड़ा सा. ओके.
Peswardal picks up the opening kill onto Guimon, but what they don't know is they can finish a lot of damage, and there it is, overkill even from Wardell. Drone's gonna respond with even इंडियन टीम्स एसए के लिए रेडी है कि नहीं? इंडियन टीम्स सबके लिए रेडी है भाई, टेंशन मत लो. गेम कब तक सेटअप होगा? 15th. जो पूछ रहा था कीबोर्ड के बारे में, अगर बजट हाई है देन गो फॉर आई डोंट नो HyperX स्टील सीरीज. HyperX एलॉय काफी अच्छा है. इफ बजट लो है तो Zebronics, Redgear, Cooler Master, depends upon you. हमको पता है बस तू डेली देखती हो. बुट कैम्प सब नहीं पूछ सकते ना जॉइन बटन के बारे में. ऐसे ऐसे गाने सुन रहा हूँ, जस्ट दर्द मिल रहा है मुझे ऐसे गाने सुन के. भाई बैच के बुट कैम्प या 3 बैच के सब वीडियो आएगा. फॉलो समुराई गेमिंग फॉर दैट, यू नो, यू कैन फॉलो हिम. कीबोर्ड प्लीज बोला तो मैंने, आई थिंक मैंने कीबोर्ड के बारे में इतना बड़ा तो बोला अभी. बॉलर उछल रहा होगा अभी. GenG had chance to win. Definitely they had. Through. Sabruza 23 on Oman. Too fucking good. ट्राई के अलावा तो सब मुंबई से है ना? यस. बेस्ट गेमिंग हेडसेट पता नहीं भाई. Probably I think जो माई वाले यूज करे, आई थिंक वही है ना वो, लाइक लॉजिटेक का वायरलेस वाला जो एकदम नया वाला. आई थिंक दैट इज आल्सो रियली गुड. सोल न्यू टीजर देखा क्या? यस देखा मैंने. इनसेन मैन, इनसेन. क्या टीजर था वो. वही है ना लाइक जो मॉर्टल स्प्रिंग पूल वही वाला है क्या? देखा मैंने. टेक्निकल जी का गेमिंग हाउस एंड सोल 2.2 बुट कैम्प बेस्ट है. यस यस यस. लॉजिटेक G302 वही होगा. मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, डोंट कोट मी, बट वही वायरलेस वाला जो भी. आई थिंक इट्स प्रीटी गुड. HyperX Cloud 2 is also really good, like Cloud 2 core. You can even go for that. अगर इतना हाई बजट नहीं है लॉजिटेक जितना तो. फेल दिया रे, फेल दिया. Mortal is love, yes. Mortal is love. माउस बता मस्त सा अंडर 3K. अंडर 3K लॉजिटेक का ही ले लो भाई, वो 403 या 402. If you can go for 403, 403. If not, 402. बेस्ट माउस 402 तो भाई फेंको तोड़ो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता माउस को. लॉजिटेक में भी बजट माउस कीबोर्ड है, वो चेक कर लो. हाँ, सोल का लाइनअप भी अच्छा है. यस, का लाइनअप भी काफी अच्छा है. कंपटीशन बढ़ रहा है भाई इंडिया में. लेट्स गो. टेल इन 12-15K कीबोर्ड. 12-15K. I think HyperX Alloy. Yeah, I think HyperX Alloy is sexy. उसमें अगर if you want to go for fancy, अलग अलग switches है, वो अलग अलग switches पे भी जा सकते हो, you know, just to go fancy. Oh shit. Oh shit. Sabroza, let's go. ये expect ही नहीं करेगा. Yeah, he did not expect it. तेरे पास कितने बिटकॉइन है? मेरे पास नहीं है बिटकॉइन. माउस की बात नहीं कर रहे भाई. माउस G Pro इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुश्किल से मिलेगा. साई इज स्पॉन्सर्ड बाय लॉजिटेक एंड ही आल्सो डज नॉट हैव G Pro. No, it's really hard.
I have G5020 awesome. Massively. You gotta even सही go है. back. It kind of lingers in my mind. I have That brown Frenzy suit. round where Sabrosa is able to pick up that dropped AR over to B long thanks to Wardell and his opening ghost shots, and then he finds 3 kills with it. I think Black Ninja, you should go for HyperX Cloud Core 2. Notice about GenG is they're having Ma. some problems in full-on gun rounds, especially from the defensive sides of maps. That one absolutely included, as they only take 3 rounds defensively. 2, like we mentioned, came off the pistol and the anti-eco. That was the third. Not exactly the greatest situation for GenG, especially considering that, hey, Avril, that was their map pick. कुछ के पास है जी ब्रो. हाँ मतलब वही जिनको मिल गया बट अभी इट्स रियली हार्ड. और जो मिलेगा भी तो वो बाहर से आएगा, जिसका जितने का माउस है उतना ही तुम्हारा शिपिंग लगेगा. फॉर एग्जांपल अगर अराउंड 9 या 12 हज़ार के बीच में माउस है तो उतना ही शिपिंग भी लगेगा. तो इफ़ यू आर रेडी टू पे दैट मच देन गो फॉर इट. भाई ने 25 क्लच मारा. लेट्स गो. I said he is cheaper. So in the second half, he actually didn't pick up a single kill, which is really, really rough, and that includes Dyna Wardell and that very long range shot and B long that gave Sabrosa the gun, which ends Sabrosa on, what is it, 28? Nearly on the 30 bomb. It probably would have hit the 30 bomb as well if we had another couple of rounds. So Trying it as well. Maybe most likely the तो बोल रहा हूँ रेजर वाइपर अल्टीमेट ट्राई करने वाला हूँ मोस्टली, बट लेट्स सी. आई थिंक इट्स टाइम टू गो वायरलेस. सब लोग वायरलेस खेल रहे हैं. देखता हूँ भाई कैसा लगेगा. अगर नहीं जमा तो डिविना के ही ले लूँगा नए माउस किट्स. दैट्स इट. हजार के माउस पे प्लेट. लेट्स गो मैन, लेट्स गो, लेट्स फकिंग गिव. लाइक करो गाइस, लाइक करो, लाइक एंड इंस्टा फॉलो. ये मैच पहले होने चाहिए थे. आई वांटेड टू वॉच दिस मैच. काफी इंटरेस्टिंग मैच है ये. 100 थीव्स वर्सेस एनर्जी. कैसे खेलेगा ये इथन? भाई का माउस चुरा ले. मेरा माउस पैड है हाइपर एक्स फ्यूरी. प्रो सुपर लाइट यूएसए में स्टॉक नहीं मिल रहा. यूएसए स्टेट टू स्टेट भी नहीं मिल रहा. वही एग्जैक्टली यही तो मेरा पॉइंट था. आई ऑल्सो वांटेड सुपर लाइट. हाउ आर यू सागर? ऑल गुड मैन, ऑल गुड, ऑल गुड. तुम कैसे हो भाई? सब सही, एवरीथिंग चंगा. यूजिंग द सेम 6 years old किट. मैं भी रे, बहुत पुरानी किट है मेरी. बहुत रेयरली चेंज किया मैंने. If you want to play games professionally, you should have a while. ऐसा you should का ऐसा कुछ सीन नहीं है, बट आई वांट टू ट्राई. मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है, मतलब कैसा फील होता है ऑब्वियसली. बट मेरा जो माउस है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था जब मैंने लिया था. इट्स नॉट लाइक नॉर्मल गेमिंग माउस लाइक 4, 5, 6. ये भी काफ़ी महंगा था. इट वॉज अराउंड 9 या 9.5 का था. S2 डिविना. का था. Mayank will buy next door. एक बात बता, G402 के जैसे में कोई Zowie का माउस है? G402 देख, मैं कैफे में G402 ही खेलता था. उसके बाद मैंने घर पे आया था तो आई स्विच टू स्टील सीरीज, और फिर स्टील सीरीज से मुझे आदत पड़ी. मैं स्टील सीरीज का सबसे 2000 रुपये वाला जो भी था वो राइवल 102 101 ऐसा कुछ तो था, वो 105 यूज़ करता था. नेवर माइंड. या स्टील सीरीज राइवल 105 यूज़ करता था. फिर उसके बाद मैंने स्विच किया था इसी 2A पे, फिर 2B पे,
फिर ZA13 पे, और देन अभी आई एम एट डिविना S2। स्किन जो V2 Pro नहीं, तो आई थिंक G402 के जैसे इसी 2 है, 2A ट्राई कर, या फिर 2B ट्राई कर। 2A आई थिंक बंद हो गया, 2B इज स्टिल अवेलेबल। कोई कैफे में जा, इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, मुंबई में बहुत सारे कैफेज में है 2A 2B, तो यू कैन ट्राई कैफे में जाके खेल के कैसा लग रहा है। 100 110 310, अराइवल 100 और 105 पे खेलता था पहले मैं। भाई जी प्रो पियो पियो। 800 पे तेरी है 0.1, दो है तेरी मतलब आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, वेट, ठीक है सागर, इट्स नॉट दैट हाई। सब मत लिखो भाई, जो सेंसिटिविटी है वो इट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू, हाउ यू फील। तुम्हारे हाथ कैसे है, तुम रिस्ट पकड़ते हो, फुल आर्म करते हो, उस पर मैटर करते हैं। अगर जब तक तुम लोग कंफर्टेबल हो, लाइक तुमको स्ट्रेस नहीं पड़ रहा हाथ पे, तब तक कुछ भी यूज़ करो, कुछ भी। और ऑब्वियसली अगर तुम गेम में भी मार पा रहे हो और हाथ में भी कंफर्टेबल है, देन यूज वट एवर यू आर यूजिंग। होना जरूरी नहीं है, यू हैव टू बाय एक्सपेंसिव, आई एम गोइंग बिकॉज आई ऑल शुड बाय व्हाट योर पेरेंट्स आर रेडी टू पे। आई एम प्रीटी श्योर 2K 3K वाले भी अच्छे हो। यप, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। भाई मैं जब CS खेलना चालू किया था, मैंने क्या बोलूँ, अभी फोटो दिखाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कल। वो जो डेल का माउस नहीं आता है क्या, लाइक 300 400 रुपए का वो माउस, और वही डेल का जो माउस पैड आता है 200 का, लाइक पूरी जो किट आती है 600 रुपये में, वो किट पे खेलता था भाई मैं अपने घर से CSGO। और वो किट पे मैं लाइक SMFC तक गया था, लाइक जब MM ग्राइंड कर रहा था मैं, जब मैंने नया नया CSGO खेला था। SMFC टूर्नामेंट्स खेले मैंने, वो वाली किट पे मैंने आई थिंक 1000 1500 घंटे खेले हैं, यू नो। या इट फकिंग 600 की किट पे खेला हूँ मैं। जो सबसे महंगा मिल रहा है वो ले लो, ऐसा कुछ नहीं। CS में माइक्रोसॉफ्ट था, वही 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 एग्जैक्टली वही माइक्रोसॉफ्ट डेल, वो वाला माउस था मेरे पास। अभी भी होगा किधर तो, टूटा हुआ पड़ा हुआ होगा, जस्ट किधर ढूंढना पड़ेगा मेरे को बस। जस्ट जिसमें 800 DPI फिक्स रहती है। विच टीम इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? नो, अभी पता चलेगा ना, लैन हो रहा है मेरे भाई, जो भी जीतेगी दे विल बी द बेस्ट, यू नो। देन देर इज नो इफ्स बट्स। इफ यू डोंट परफॉर्म, यू आर नॉट द बेस्ट। द बेस्ट की बात करें तो पता चल जाएगा। हेडफोन्स अंडर 4K, आई डोंट नो, पता नहीं। 4K 1000 और बढ़ा ले अपना बजट एंड गो फॉर हाइपर एक्सटिंगर। और बढ़ाना चाहता है तो गो फॉर हाइपर एक्स क्लाउड को 2। अगर तू बढ़ाना ही नहीं चाहता तो 2000 में रेड गियर ले ले मेरे भाई, 2 2.5 हज़ार में जितने के भी आते हैं, तेरे पैसे भी बच जाएंगे, तुझे हेडफोन भी मिल जाएगा। आई यूज्ड टू प्ले CS इन अ माउस व्हिच हैड अ बॉल इनसाइड, सिंस इवन सी कोई नहीं देखता तो तब। व्हेन आर द लैंड इवेंट्स कमिंग इन इंडिया? आई थिंक स्काई स्पोर्ट्स का लैंड होने वाला है, देखते हैं। लेट्स सी। आई थिंक विजन स्ट्राइकर इज द बेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है लोग EU को कुछ ज़्यादा ही लाइक अंडररेट कर रहे हैं, यू नो, काइंड ऑफ लाइक दे आर जस्ट लाइक व्हाटएवर। मेरे को लग रहा है EU वाले फेल सकते हैं भाई, कुछ भरोसा नहीं है। बट EU का भी वही सीन है, उनका थोड़ा बहुत वियर्ड है, कभी कभी बहुत वियर्ड खेलते हैं। Let's go. I think TSM, अगर जेनजी ये मैप जीती, मेरे को लगता है जेनजी आइसबॉक्स जीतेगी। बट अगर TSM हैव टू विन दिस मैप टू विन द सीरीज, आई थिंक।
TSM when they were still kind of working with Guys, welcome to Chennai में 11 minutes. I'm ready to watch all of you. Let's go, let's go, let's see. पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा मेरे भाई. Let's see. अभी तो कर रहे हैं, चल रहे हैं, you know. गेम सिखा विम्प, सिखाएंगे भाई, सब सिखाएंगे, टेंशन मत ले तू. Hi Wimp, hello Links. How are you? How are you? How are you? Games on Ascent Yeah, so far truth. in VCT for TSM, to be fair with you. There's been some very close ones, but they haven't dropped any. No matter how close the games have gone on Ascent, TSM have held that देखते हैं. one. I want to see Well, setups, all fast KJ for setups. GenG if they want to see Icebox, which would be map number What? 3. And as we get things kicking off, it will be GenG starting things off defensively. You need to तूने start प्रॉमिस किया था यार सिखाएगा. हाँ सही है. मैंने प्रॉमिस किया था मैं सिखाऊंगा. तूने CS तो नहीं सिखाई ना मुझे लेकिन. Defending first TSM here on the attack. Wait, trying to go what? over No. towards the CS भी मैंने सिखाई थी तुझे. Wait, what? So, not opting I am very good. How are you? कैसा था आज का दिन? officials for a long time, I think, for most teams on this particular map. अच्छा था. We had the change from आपको the तो सब पता होगा. and also Devour opening Recon just clearing over into mid and GenG तब TSM taking full मेरी बजा रहे थे बेमतलब की, हमेशा की तरह. They've allowed a lot of space here for TSM to potentially work through the middle of the map, of which Cutler will just confirm. Okay. पोलैंड स्टेट वाली टीम्स की तरह ही होगा ना. यस यस यस. बट आई थिंक यू हैव टू कम टॉप 2. खाली टॉप 2 का ही लैन होगा. पूरा टीम ऑल द टीम्स का नहीं होगा. लेट्स फोकस ऑन मैच. टिपिकल ए अटैक या व्हाटएवर. ओ जीएमडी को गुस्सा आ गया. ही आल्सो वांट्स टू किल. स्नेक. आपका भाई क्या खेलता है वेलो? यस भाई जेंजीस यार टू प्ले. दे डोंट केयर अबाउट लास्ट मैप. दे आर लाइक फक इट. मारेंगे हम लोग. मारो. आई थिंक जीएमडी है जिसने लाइक काफी अंडर परफॉर्म किया था लास्ट मैप में. तो इफ इज रेडी लेट्स गो. मैं बूट कैंप पे पिटने वाला लगता है. समझ जाओ भाई क्या हालत होने वाली है. इसलिए मैं सबका सामान लेके चल रहा हूँ. यू नो जो ये लोग टीम चैट टीम स्पीक में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं, डायरेक्ट मैं ऑल्ट F10 करके एनवीडिया के उस पे सेव कर लेता हूँ जी फोर्स में. तो अगर किसी ने कुछ मेरे साथ ज़्यादा किया, मैंने सबको बोला मैं रिलीज कर दूंगा. फिर देख लो करियर जेपटी में चले जाएंगे. खतरे में हो जाएगा पूरा करियर. सोच समझ के. आपके भाई का क्या रहेंगे? गोल्ड है. आर यू इन बूट कैंप? नो आई एम एट होम. Sean once again finding first blood. It's Sabrosa who is trying to search for information through B main. That's going to be very unsuccessful. Now the curveball play not going to be Oh bhai, success either. anti-flash in Valorant, not worth it. To respond for 2. And now it is just a 2v5 overall. Sean wanted to play aggressive to the middle. थोड़ा ज़्यादा हो गया ये. Has a ghost, so no real upgrade there for TSM. And well, Wardell will find the sheriff for a kill, so an opportunity is starting to brew, but the problem is you've got Wardell just to 11 HP. The spike currently being looked at kind of by Gimon. I mean, he doesn't actually have full sights on it, but he's very close by. Smoke's going to come down to slow things. And like you mentioned, the HP not looking great actually for either player. So it's gonna come down to reaction here from either side. There is going to be a second response. You see Hwin's close by, so even if Gamon goes down, the trade will be there. And I mean, it's not even going to be required. Spike will be found again. Doesn't really matter what happens over this side of the map. Kusa could die. He could give over the Stinger. But even that being the case, I don't know that's going to be enough for Cutler. No, not on 3 HP. Again, no spike in hand. He's got to rotate all the way back towards. In black member, You do see Guamon has कोई तो attacking spawn. कोई तो बंटी भाई नहीं है ना. Cutler. And मतलब time for him to even collect this spike and try to make a play would be hard. मैं ही बंटी भाई हूँ. बात ही खत्म हो गई. चलो But he'll give it a try. सबके स्ट्रीम में ऑटोमेटिकली 144p हो जाता है, बट मेरे में 720p हो रहा है जब स्टार्ट कर रहे. कोइंसिडेंस. तेरा नेट अच्छा है. At least he may be able to plant this for a bit of extra economy, so yeah, that will still come down. मार दिए रे. 3 मार दिए मिलके. गिरते पड़ते मरते झगड़ते मार दिए. बढ़ाता हूँ. Through 3 kills so far, 1 death. I think the 1 death Who was very will win? consequential. Again, he is playing the Reyna here, looking for early Empress timings. So dying there, and just trying to make a play, pretty worth it. I mean, it did get kind of close. If it wasn't for the fact that they also got the extra kill into Wardell over towards A main, securing the spike, that could have been a little bit more dangerous.
Again, dying for Kusa dying over towards B, not the worst Oh, in the world. what? Now, Shaw straight away. way. A shift. ने डीगल से Tap. कोलैटरल मार दिया. Mess, and that just might be the push. Oh no 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 no. Tap or just the headshot collide? कोलैट No. कोलैट कोलैट. I mean, that क्या ऑब्जर्विंग है भाई, क्या नल्ला ऑब्जर्विंग है. Up 2-0, but this is third round where this is the weakest third round arsenal that they've had so far. Not apparently. As the sheriff will find 2 kills. Sabrosa trying to make his way over. Kusta here with a ghost. And there will still be a lot of pressure for TSM, but the problem is, can you get through Sean? There's already been rotations. Like, I mean, look at this. GenG are here to play. Now they got 4 members roughly nearby. Quinn still hanging out over towards 150 likes done, let's go. market into spawn. भैया stun खेला नहीं. या not allowed, not allowed, not allowed. एक महीने बाद allowed होते हैं. सब यूज कर लिए को, बट कोई अंदर गया ही नहीं. They are just waiting for someone. I don't know who. Maybe haste. कि play बनाएगा, but वो already spot हो गया है shot वाले से. Oh. I think Sean अपनी life throw away करेगा क्योंकि they will not expect Omen. Does he want to try to push through this dark cover though? Is the question. 5v3 just play side. छुप जाओ रे side में. Is going to back up to try to save. That does allow those Oh, ARs to they know they are saving. So that is an expensive Oh round. shit. More ways than one. 2 राउंड जीत कर इको पर कैसे? इको पे नहीं है मेरे भाई. वो डिगल पे क्योंकि this is bonus round for GenG. They can't win with Spectre against Vandal. Like वैसे सोच के वो लोग खेल रहे रहेंगे. ये bonus round है. Why don't pro use Yoru? Because it's not good. Yoru is not good. Elder Flame is banned in competitive. No. At least have some ability to hold on to 2 extra guns in terms of stopping GenG from having them. As what a huge round. Sean getting that. भाई TSM जीतो, मैं जाऊँ सोने. It's big enough that the round straight there was going to be too hard for TSM to continue with. Early nanostorm coming out. A curveball sent forward from TSM as they want to get control of B main in a very important round here. नया Being completely honest, because TSM नया वाला यूज कर रहे हैं भाई ये लोग. न्यू पैच इट इज 2 और वाला. their economy as much as humanly possible. Recon Bolt dealt with. Lear gets tossed out, but instantly canceled. Then it will be a dark cover that results in kind of stalling this push for TSM. Hello, Sneaky. Well, shots being fired by Huen over towards mid, doing a bit of damage as well. You'll notice, by the way, that there's only 1 ultimate on board for both teams, and that comes through for Sean. So when the timing is right, the Empress could be popped. Gimon notices a bunch of players in mid, has it smoked out now. Still an alarm bot to cover the tracks. As TSM is starting to move over towards the A side of things. Huen is watching this one. Jet. Gen कर रहा हूँ Jet. Not just on the one, but on the 2 different players now put. Oh shit. TSM have not fully committed yet, but the Bladestorm has been earned by getting 2 of those ultimate orbs. Now the battle will start to ensue. Really wants to hold on to this. Drone able to find not just 1 but 2 of his own up top from Ardell. Able to find draft play. So GenG's. अगर किसी को पता नहीं है कि वो ए शॉट पे तुम लोग सोच रहे होगे कि वो स्मोक के थ्रू ऐसे कैसे जा सकते हैं, इट्स अ रिस्क. तो सुआ जेट खेल रहे थे. सुआ ने एक ऐसा एरो मारा जिससे पता चल गया कि ये जो एरिया है बेसिकली ए शॉट का, जो ये जो एक लेन है जिससे साइड या फिर गार्डन घुसते हैं, वो लेन का एरो मारा और वो 1 वे डाल रहा था बार बार जेट जस्ट टू डिनाई द इन्फो. क्योंकि अगर वो लोग इसके अंदर आते थे उसके 1 वे के थ्रू तो वो स्पॉट हो जाता, बेसिकली स्कैन हो जाता. और वो लोग जैसे ही वो ट्रिपल स्कैन गया स्मोक करके दे पुश्ड बिकॉज दे न्यू कि कोई आ नहीं सकता, कोई थ्रू था नहीं बेसिकली. वाओ, ये भी एक प्ले है. ठीक है भाई. Every single time, like GenG make a massive play happen just 1 round ago. Drone and the rest of TSM come through big time. Can any Indian not play against? क्यों नहीं भाई? GenG's hold on tree. I mean, they would have had a short kind of cover between the 2 members, spraying down any members of TSM trying to come in. There were 2 pistols coming in from TSM as well. Wardell only started the round, by the way, 4 out of 6. He had to find the ultimate in the middle of the round to even get the blaze storm. Yep. That's got to be a big pickup, I think, for TSM to bounce back so far early in the half. A lot of aggressive utility being Rix. thrown out for ये GenG. रिक्स है, रिक्स. A big रिक्स. This long A डैश आया. curveball coming through. ओह, जस्ट बचा कटलर. Enough for an elimination, so first blood does tilt in favor of TSM, who do still have a run it back and a Hunter's Fury to use for this hit if so required.
भाई फुट क्या खेलता है यस Tough situation for भाई TSM. आज Bugsy रैंप आ गया started कफ with the में recon. He was just hoping that he could find a timing to तुम get शुरू through. किया गांड मर As soon as the recon peaked, एंजॉय no real बहुत chance सारे to find क्रैम्प्स the आएंगे अभी smoke स्टार्ट there. में Just had to trade one for one, but couldn't quite get that one kill. Drone now following another drone, the owl drone that is into A, and it's pretty clear right now. Drone's not going to get a kill here, but he'll confirm Oh. that the side is entirely free. Okay, that's It's got to be a bit of alright. tax coming from Mikhail. Okay. That's Bye bye. huge. The run it back टाटा costs absolutely nothing. वो है ना भाई राहुल गांधी का मीम चलो टाटा बाय बाय सप्रोजा के साथ वो हो गया भाई चलो टाटा बाय बाय Bro, you used to play CSGO, yes. With the spike down and still a Hunter's Contact. Fury to play with, this would have to be a big piece of contact here for Kusta, who is just going हाँ, to for more rotators for इतनी TSM. बड़ी So चिपकली this इतनी is बड़ी the lead. मेरे दरवाजे पे Wardell on the site by himself. If Kusta can take down the Sova right around the corner, it would be massive, but he doesn't check it. Now the Hunter's Fury could be what is needed for TSM to try to hold this up. Into the site goes drone. ओ ओ ओ And a second, could he get a third? No. कैसे रे Kale running out of time. Recon bolt comes out. Wardell will finish the final kill as he just kept lurking in hell, and TSM. हेलो still bazooka how are They you won't even need the Hunter's Fury either. The recon's going to be good enough here, and despite a decent नहीं होगा ये गेम बड़ी बकचोद गेम है like you sort of mentioned from Kusta on the haze there, smarter plays by Cutler just to tuck away behind the box. It's not going to get checked at all. NV4 and Crush is number 1 and number 2 game में yeah like in leaderboard I know Decent one coming through due to the fact that yes, Subrosa did die on rotation. Drone not going to get anything out of his runner back either. half buy कर रही है GenG It's the A retake. I think oh they're going to push the strat the jet strat for a couple rounds in a row. So we talked about potential timing for Sean. Timing's gone for Sean now as they try and Whoa. rush their way through A main and get to oh shit oh shit drone is like ना खत्म बहुत हो गया मजे ले लिए अभी तुम लोगों ने बहुत बस ड्रोन ऐसा मार रहा है फिनिक्स पे चलो जी what is that? कभी सुपर सेड्यूसर 2 स्ट्रीम करो मजा आएगा करेंगे It's pretty ridiculous. So I'll be looking forward to that again. A triple. See the patience here from क्या TSM. मारा उसने तीसरे वाले को GenG going to do something crazy here. They do. Just chill out. Let GenG run into you. Let them run into your rifles and Wardell's operator over to इंडियन और खेलेंगे तो पिंग इशू kills they need. कैसे भैया ऑल गुड मैन ऑल गुड हाउ आर यू बसूका Defensive operator for win. Away from Bladestorm. Opening shot's going to reveal the positioning and reveal the fact there's an operator there. Again, aggressive ये लाइनअप से मॉली डाल रहा है हरामी through A main. Wardell with the जी operator. जी कूद के आप शॉट मत ले लेना बस बाकी सब ठीक है Owl drones will be exchanged. Drone tries to make his way forward with run it back, but does get instantly denied. Mikhail from the side able to find. Oh. Sabroza ने बदला लिया He's gonna be able to find the counter trade. Wiman into the site, not gonna get to Sabroza either. नॉट लाइक दिस TSM once more. Maybe good. Nice. And it's down to Quinn and his two भाग गई comrades. कहीं तो चल दी बेड के नीचे नीचे किधर तो गई भाई TSM have landed a lot of shots through smoke here, specifically onto Giman. They also मैडम मेरे भाई लैन होगा लैन हम लैन पे मारेंगे यू नो shot from Wardell into when they actually takes him down. Sabrosa has full control so far. In towards Oh. the smoke and the. Well, I was gonna say. तो ऐसे ही मरे जा रहा है भाई बस Oh. Oh. Hello? Can't quite get into Cutler now for the 1v1. Clutchler, maybe holding it. Sentry turret still there. वो मार दिया Oh, no, Kusta मार दिया कुश्ता ने बहन चूत hits the headshot. And Sean Jack able to OP. flip around and go up by one. Sean fucking OP insane Turret did a lot of damage. The turret was confirming when the peak was happening as well. So if you're Kusa, you can kind of just rely on the turret info to see when Cutler was going to peek you. And just playing off that info plus the damage is so big here. Like it was like a 2v1 right towards the end there. You gotta feel bad for Cutler. And Kusa's gonna get it all done there. Kill plus the defuse. And Sean coming up massive. If it wasn't for Sean, टरेट तोड़ देता द थिंग वाज वो टरेट इसलिए नहीं तोड़ा उसने क्योंकि ही वाज लाइक सपोज अभी मैं डिफ्यूज कर रहा हूँ ठीक है इफ यू आर डिफ्यूजिंग और तेरा टरेट शूट कर रहा है मतलब वो यहाँ पे ही खड़ा हुआ है एंड ही इज अबाउट टू पीक तो वो आई थिंक बेट करने की ट्राई कर रहा था कि वो डिफ्यूज ना करे टरेट की लाइक जानबूझ के टरेट पे यू नो जिगल दे रहा था गाइस बस लेना है यस आई नो जॉन ने क्या निकाला भाई G still on the table as well for Gen आपका G. भी समुराई की स्ट्रीम देखते हो यस आई वॉच समुराई स्ट्रीम अ लॉट Condition here for Gen G's defense. समुराई On the other side, a lot of utility for TSM again.
Early nano swarm will be sent through the middle of the map. क्या पोजीशनिंग है भाई, ये भाई के पास अल्ट है, ये कहाँ खेल रहा है? Cover will allow the Ooh. swing. Kusta's able to read one rifle. Paranoia comes out. There's the भाग जा, भाग जा, भाग जा। also gonna be committed for this. Win will take a bit of friendly fire, but at the end of it all, मार देगा। with first blood and ये जेट वर्सेस जेट में जो पहले हिलेगा बेसिकली वही मरेगा। but he's kind of stuck at the moment, and we'll have to use the teleport onto the site. बाप रे, The operator. दोनों ने निकाला। Now it's a knife fight between both. Oh boy, it's going. ओ माय गॉड। What do you want? Respect the 1v1, please. Cloudburst Oh. being exchanged. Win uses the right click. Has to try to get a quick scope in. Oh my goodness. Dancing with the devil were both of our jet players. But it will be TSM who gain control of the B site for the 2v2 to play. Yeah, dancing with maybe two left feet there. How do you miss that right click? Oh, that really hurts. That could have been such a massive play from Quinn. And GenG, they could have had a 3v1 in the situation. I mean, thankfully for there, Gimon picks up an extra. Sub-Rosa now 1 versus 2. GenG, I mean, a double peak will do it. There's not a lot of health. Sub-Rosa's on 63, so as long as they don't line up, I mean, this should be it. Lea's going to come through. Sub-Rosa tucking in very close to the boxes now. And as long as there's no timing or lineup again, it should be a trade. It won't even be required. Sean will just get the swing and the kill. And into the defuse as well. And deliver that one. हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते भाई ये जेट, इसलिए ऐसा हुआ है। Hilarity ensues in B main, but the business end of the round will go. You still studying or done? I मेरे 2020 में मेरा मार्केटिंग डिग्री हो गई मेरे भाई। I have a degree, but yeah. Most entertaining 1v1. दिसंबर में मैं डिसाइड करूँगा, like ईयर के एंड में, Was just not fair, was it? if I want to go for GMAT. I mean, think of a world where Quinn is able to keep his blade stone. We just keep going back and forth between knives and operators. Eskeros is suicide after watching Not this. the riot. Maybe that could be our next game mode to come into play. Knives and operators. That's all you get. तेरे से बुरा होगा ये। Knives riot. ओ भाई, भैया कभी चैट में Spent all the util, didn't कभी चैट करो वहाँ, अगर मॉड नहीं होंगे तो टाइमर दूंगा कभी। What the fuck? spend a flurry of fumbles. Unfortunately, both players unfortunately not able to. स्कूल में कहते थे शान शरीफ या बकचोद हरामी। देख के क्या लगता है कितना शरीफ हूँ या कितना बड़ा, समझ जा। If you think I'm a sharif, I'm a sharif. Think I'm हरामी, I'm हरामी। हेलो, मैच मेकिंग चल रही है यहाँ तो। मॉड बनाओ कभी, बनाएंगे बनाएंगे। एक नंबर आराम ज़्यादा। द प्रॉब्लम वॉज इन स्कूल की मेरी 11th स्टैंडर्ड तक मेरी हाइट बहुत छोटी थी, लाइक लेजिट बहुत छोटी थी। आई थिंक मैंने फोटो भी दिखाई थी अपनी। आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट किड्स इन 10th स्टैंडर्ड। तो मैं ज़्यादा कर नहीं सकता था, तो मैं जितने भी हरामी लोग थे सबके साथ दोस्ती कर ली थी मैंने। ओ क्या मारा इसने बेंचो, अब ड्राफ्ट। उफ उफ उफ। जितने गुंडे थे, लेकिन तुम्हारा भाई बजने में एक नंबर था और बकचोद एक नंबर था। मतलब कोई मुंह से लड़ाई नहीं कर सकता था क्योंकि मैं सबकी ले लेता था। तो जितने भी हरामी गुंडे जो मारने वाले लोग थे सबके साथ दोस्ती कर ली थी मैंने। तो कुछ भी टेंशन होती थी उन लोग को बुलाता था। इजी लाइफ। फिर 11th में थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर हुआ हूँ। लेक्सी के लेवल तक कभी नहीं पहुंचेंगे ये लोग। Sabrosa will give away his position in mid-market, but I just don't know if it's going to make too much of a difference. Win has missed a handful of. फिर से शॉन ने मारा। Unfortunately, Sean's able to kind of make this a bit more respectable, but there was no world that TSM dropped that retake. भाई कितने साल का आपका? अभी वो है 15। हेलो क्लाउडा ब्रो, हाउ आर यू क्लाउडा ब्रो? ऑल गुड गुच्ची। मेरे को पता नहीं इस गाइस वाइस वालों ने मॉड बना दिया अचानक। एक हफ्ते पहले चैट कर रहा था, नाम के आगे ब्लू साइन आ गया। नाइस नाइस। मॉड से क्या बेनिफिट होते हैं? कुछ बेनिफिट नहीं होता रे। पता नहीं लोग क्यों बनना चाहते हैं इतना। तो यू आर नॉट शरीफ, यू आर क्लासिक। गंदा। टीममेट प्रेप करोगे वही एग्जैक्टली अननोन। लाइक मैं दिसंबर में साइड पैर चुत क्या मार रहा है ये। रोन ऐसे मारता है, फिर मेरे को होप देता है और फिर बाद में मेरी होप को खत्म कर देता है। मैंने डिसाइड किया आई एम गोइंग टू गो फैमिली फ्रेंडली।
really No did not bad see words, full nothing line like of that. sight. Chat some So answer. it's gonna be a 2v4 situation that GenG भाई साहिब बोला तेरा और fire बीएम will किंग retake in, or at least make this punishable. कुछ नहीं हुआ आंसर. I mean, GenG loads Nothing the damage happened. here, and साहिब while चुटिया some बनाता है. damage comes through from Sean, but Sean can साहिब take का it. नाम आया तो गाली आ गई मुंह में. In terms of at But least नहीं. getting one kill. That might be the only kill though. The rest of GenG hoping to find a few more on rotation out. They know B main is safe. ये लोग इंडियन प्लेयर से मैकेनिकली सुपर. कोई मैं अब इंडियन प्लेयर से कोई कुछ ऊपर नीचे नहीं है भाई. यार इक्वल. यार बेटर. A third kill so far this round, and Drone even used with the running back. You know, part of me thinks was it an overcommit, but at the same time, just having the safety, get the round in there, don't lose the pistols, don't do anything, you know, where don't have any sort of weird situation, gives you any more guns, keep it safe. 3 still alive. ये साय नहीं पसंद. Even at the cost बोल of रहा है भाई. to be fair, that's the How third can you not like that guy? and I wouldn't be How? surprised in the next 2 rounds he finds a 4th ultimate. I was about to say the exact same thing. I mean, if he keeps on pace for what he's been able to do as far as earning his ultimate, we'll probably get it in the पर हमें बनना था तेरे को. But nice final shot from Mordell as well, just to make sure. अब तो साहिब भी बॉम्बे में. साहिब वापस चला गया ब्रो. वो सिर्फ आज आया था शूट के लिए. That's it. शूट के लिए आया था, हमको मिलने आया था. That's it. इसके लिए तो बिल्ड डिफरेंट भाई. बिल्ड डिफरेंट. अल्ट्रा मोड का ज़्यादा काम हो जाता है. हाइट. For TSM to get into B main, and Sean will back up just a touch to pay some respect. GenG coming through with the expected A main control. Drone coming through onto the B side of things where Sean is waiting. Unnecessary GNL. I don't know. GenG have the ultimates required to get this round Chill underway. कर रहे बाबा पवन. Chillax bro. Chillax. TSM will delve Chill into the X. 1-for-1 so far, and GenG are going to use this from the shadows to confirm Gimon to the backside. Yeah, it was kind of a delayed call on do we want to use the Hunter's Fury. You saw the recon bolt was able to recover onto 2 players inside the boathouse, but just a small Play like hesitation, tens. not really allowing the Hunter's Fury to find any kills, but it does create मैं भी space, मानता हूँ रे. like you mentioned, go सच forward, forward. निंजा ने वैसे 100% बात बोली है. Yes, I play like tens, but I don't play Valor like tens. मैं कुछ और गेम खेलता हूँ उसकी तरह. I don't know. Among Us, I do play like tens, but not Valorant. They have rotated through the middle of the map and have made their way onto A successfully without contest. Ludo. And that's हाँ, Ludo, Among Us. really heavily rotated. ये सब खेल सकता हूँ मैं. Not Valorant. Shadows there, leaving Mikhail by himself, and between a rock and a hard play, stuck over towards 3 players coming from both sides. Cutler's going to see that the Lexius thoughts in Ultra how to play. based glass as well. Again, this Oh, will be a good let's start go. for the Empress. Double up draft. GenG need to try and squeeze through 2 last Go rounds. for Last it. 2 rounds being Go for it, close. bro. It's gonna be a full commit. No I think contact होगा. अब आप करेगा क्योंकि उसने फ्लैश किया ना. Oh shit. Let's go Waddle. Side. Oh चुम्मा. क्या सेक्सी खेला Waddle ने. Sexy. Waddle is sexy. really well played there. I mean, हाँ भाई आप प्रो अभी समुराई स्पोर्ट्स से फाड़ देना. फाड़ देंगे भाई. Tension नहीं bro. Gimon, and then opens a completely free site with a 1 kill extra as well. Here comes the retake once more. The replay. Wardell picking up the opening shot onto Gimon. Who do you think Eskerosi is now? सब है रे इंडिया में. सब. We are all betters. Sub. Yeah, just better. Indians build different. पीछे कौन है? मेरा भाई है. Yeah, and he's got the Blade Storm as well to try ये to क्या cover टीपी this मारी? one. हद होगी. Potentially a 6-6 ये कैसी टीपी थी? उसको पता ही है ये फेक टीपी है. और कहाँ टीपी मारेगा? क्या ये शॉट पे? ये फेस कैम क्यों नहीं दिख? अरे हाँ ऑप्शन रहेगा. वॉडल का रिएक्शन सब रोजा के यूट्यूब पे मिल जाएगा. आई थिंक वो अपलोड करता है ना इनके कॉम्स. The good news for GenG is they keep it close, still 1-1 here. There is not going to be an Empress for this entire first half. Now confirmed with Sean's death. but Hello, good night, bro. pretty Good night, Ismail. Thanks for tuning in, man. down to me, maybe with the saber here. It depends if Kusta can get out or not. He's actually in a bit of an aggressive angle. Yep. He's right on site here. If he wanted to really use his lockdown, he'd have to be playing roughly where I think Whiffs, Caleb whiffs, with Huynh down as well. whiffs, It's gonna be rough. whiffs. Comparative here. Gimon trading effectively. Hello, Anirudh. But he's having trouble with his recon bolt in his भाई जो लोग बोल रहे पीछे कौन है एक्सक्लेमेशन बिहाइंड. क्या रे अभी तो बोला भाई 1 सेकंड पहले. कम ऑन रे.
2v3 situation. TSM. I guess Indians haven't gotten a chance, but you have telling now with Valorant will show. We will show the world, भाई. Oh, बिफ कर रहे हैं भाई जेंजी वाले. भाई बता देंगे भाई दुनिया को, टेंशन मत लेना, सब फाड़ देंगे, चीर देंगे भाई. हमें भी ऐसे गुड नाइट कर दिया कर. तू जिस दिन 500 देगा उसी दिन गुड नाइट मिलेगा तुझे आर्यन. तो समझ जा तुझे क्या मिलेगा. By the way, the triple stack to the smoke, which I think is something that GenG are not expecting, so just doing something a little bit off here, a little bit weird. GenG are not going to be prepared. बूट कैंप विजिट करने मिलेगा. मिला क्या आज? हाँ, बूट कैंप पे ही मैंने फोटो डाली. मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने बूट कैंप की फोटो डाली है मेरे भाई. तो जिसने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, मैंने बोला था मैं डालूंगा, मेरे इंस्टा को फॉलो करो, पर तुम करते नहीं हो. फिर तुम बोलते हो कहाँ है फोटो, कहाँ है फोटो. कुछ चाहिए तुम लोगों को. TSM will be up 7-5 at the half. We'll swap the sides and be back right after this. जब तू अब बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा तो हमें भूल जा. को पता लगा भाई. Tens is better than Scream. Tens better than World. Yes, we'll show the world. Optic India. We touch my Indians world. Who is the Indian professional player with whom you enjoy playing? The partner, my partner, Neymar Sai Sethi. क्योंकि हम जीत भी जाते हैं और बकचोदी भी करते हैं. अभी ये वन डिसलाइक कौन करता है? चिल रे, चिल करो रे, चिलैक्स. विम बेटर देन टेंस, ये भी सही है. आई एम बेटर, पर तुमको पता है कौन सी गेम में, नॉट दिस गेम, अलग गेम, डिफरेंट गेम. जो तुम ना हो तो होंगे हम नहीं चाहिए. 200 लाइक करो गाइस, 200 लाइक्स. क्या रेक्सी का भी ड्यूलिश खेल पाएगा? बुरुटो, सिर्फ तू पूछ रहा इसलिए, सिर्फ तू पूछ रहा इसलिए, बस खत्म. Another 7-5 exit in favor of TSM. Avril, your thoughts on the first half? I mean, it's a kind of half where I think GenG should have had more. They had rounds where, look at that fourth round again, that was really upsetting. You have other rounds where, Sean not using the Empress, it's one thing, but Kusa kind of hold on to Lockdown at one pivotal round as well. I think Lockdown versus Lockdown. A lot of teams now would just use their Lockdown defensively to counter the offensive one, or even vice versa. So there were winnable rounds for GenG for sure. This could have definitely gone 6-6 minimum, if not be 7-5 in favor of GenG. We'll have to see what they can pull it together for this opening pistol. Now Drone with the opportunity for a big flash, and he'll get it. Oh, and the simultaneous peek from Cubby, but well responded to as GenG. A beautiful recovery as they come on top of the trades. Hayes is still lingering just in case someone wants to rotate a crossover towards A, but that will not be the case. So now TSM will have to retake the B site in a 2v3. GenG not fully committing as of yet. Hayes is considering this cloudburst, but as he waits, it'll dissipate. He's going to find one kill for free. GenG not even paying attention to mid-market whatsoever. We've got ourselves a 2v2. Yeah, but Huin's on 3 here. Would have to find an excellent timing if one shot lands. And oh my goodness, speaking of one shot there, that was brilliant from Huin. Dashes away as well. Now Cutler's got it all to do. 59 as well. And Kusa finding the headshot. Yeah, it's too easy. So there it is. It's going to be GenG picking up the pistol. And is that maybe a second pistol for GenG? Yep. I think GenG have picked up all the pistols so far. I'm not mistaken. Yep. GenG have taken all 4 pistols they've had. Pretty much every anti-eco. It's the gun rounds, Chef. It's the gun rounds so far that GenG starts to slip away. Again, a huge shot coming through from Wim. If it wasn't for that one, I think, very different round. That single 1v1, I think, determines the entire post plan as we head now into the anti-eco. Double pistols here. Previously, we saw in the round 2, Sean got a large number of kills. He had a massive timing walking into the 3rd round. So maybe that'll be the case as well again.
Shakhtar will display Sabrosa. Careful here. Oh goodness, you saw a world where there was going to be another lineup. But GenG do recover and put themselves. ए भाई टॉयलेट गया था भाई, तुम लोग क्या लिख रहे हो ये सब भाई, क्या छोटा पीटा भाई, पागल लोग, घर में अलाउड नहीं है भाई ये सब मेरे। और जो लोग बार बार बिहाइंड लिख रहे हैं, एससी का 6th प्लेयर है, फ्यूचर टैलेंट है, वो पीछे बैठा हुआ है 15 साल का, यू नो, ट्रेन कर रहा हूँ मैं उसको। Good help from Guamon and GenG. Flawless thus far, 5v2 situation. Hayes makes things a bit more interesting, but is tagged up in the process. And it's going to have to be down to some beautiful shots. And, well, that's unfortunate. Drone actually flashes himself, trying to find a timing peek onto Sean. Leaves thing down to 1. Hayes, again, keeping things contested, but this is Just 15, yes. 1v3. And the touch spots him as well. There's a flank coming on through. Hayes is caught reloading, and Sean doesn't mind diving. MP Saaransh is accepting the fact Tense is better. Your goal is in these early rounds, देखा, मैं सच ही बोलता हूँ रे, तो टेंशन मत लो। तेरे को रिप्लेस करेगा वो, तो क्या भाई, तो पैसा फैमिली में आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो। गोल से ब्लाइट नहीं कर रहा, उसको ट्रेन कर रहा, ऐसे थोड़ी ना भाई, आईडी को बूस्ट नहीं करने का। See what else can happen here, because GenG, rather TSM don't want that to happen again. Early paranoia play. गत्ता फूकना क्या होता है? A person told me to try it. Don't try it, bro. And now we go back to resetting. It's not good for your health. Exactly. GenG wants to try to pull on this offense. Again, they've been great in these third rounds when TSM. I don't know. 7-7 वाले राउंड में why would you? For Sean's case, still a sheriff to play with. इसके भाई दोनों मॉली, इसने डबल मॉली एंड अलार्म बॉट डाला है। मे बी आई थिंक ये लोग यहाँ पे स्मोक करेंगे, ये मॉली पे ये स्पैम करेगा फिनिक्स टू ट्राई गेट द किल, बट आई डोंट नो। This round so far has been pretty slow. TSM have got a lot of members rotating over. Drones close by, drones here now. Paranoia is going to split the C as well. GenG are trying to get. Ooh. This could be an opening kill. Sabrosa. God. Trading 1-1. But is one going to be enough? We got a pinch strike kill feed. It does favor TSM when everything's all said and done. Kusa though able to keep things down to 2v2. कजन है किसी का, कजन भाई मेरे साथ क्यों रहेगा रे हर रात हर दिन घर पे, खुद का है रे मेरा, पर्सनल है एकदम। जीत गई रे TSM। अबे रेक्सी का डुलिश के बारे में क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। तूने बोला रेक्सी डुलिस्ट खेलेगा, तो तेरी बात सुन ली मैंने भाई, रेक्सी डुलिस्ट खेलेगा। तुम तेरे को कोई 5 करोड़ में खरीदेगा ऐसा स्लेव, क्या बोल रहा है भाई? कितना छूटिया सवाल है ये भाई, ये फिर से वही सेटअप लगा रहा है भाई मार्केट वाला। वाई 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 एक गिलास गर्म पानी पीते हो, मैं नहीं पीता हूँ भाई गर्म पानी। Not like this, not against win. Good night, Dr. Choco. Shakhtar will be pretty darn well placed. Down to 75 HP is the jet for GenG, and now it just comes down to a 60 seconds to play. How do you want to navigate this 5v4? Really important that Mikhail actually has the Hunter's Fury here, so fighting for the all. ये देखो ये क्या है, ये डबल मॉली। What the hell is this setup? Retains their numbers advantage. No trades available for TSM. Gonna come down to Guys, वो लोग को What? बार बार ये स्पैम कर रहा है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई, तो क्या पूछ रहा है? I think सबरोजा को TSM डील कर देनी चाहिए। क्यों भाई? The thing is, they are playing as they want to. You know that you've got him as low as you do. Maybe it doesn't make much of a difference. He finds not just one, but a second. Are you kidding me? Tailwinds away, and Wardell has now single-handedly made He said it. Potential round where TSM can fight back. 15 seconds to go, and GenG, they will get the spike off, but they're going to be. What the fuck is this?
What language is this? What the hell? Just barely surviving, but it's good enough. To making 3 and 3 to be fair. You look at probably about a one shot away, so effectively both Jets now. Just the one tap, and it's going to be potentially quite a tough retake here as well. Kusta hanging up. नहीं बोलूंगा मैं slowly. What the fuck? ये कौन सी गाली है? कुस्टा ने राउंड पलटा दिया फिर से. कुस्टा क्या मार रहा है? What are the miss skills miss? What the fuck? बैन करो इन लोगों को. मस्ती कर रहा हूँ. Cartilus you. What the fuck is this language? This is not Hindi. I swallow. I टट्टी रे टट्टी. मेरे को लगा कि वो चीज है बट गंदा था रे. ये गंदा था. एकदम गंदा था ये. कम से कम कुछ अच्छा तो बना के आता. Bro, are you in Samurai Sports Bootcamp? Yes. Not just, the last half, but previous maps that I've looked at for GenG and other matches they played, they've certainly been very kind of conservative with ultimates. They do want to kind of rotate them a little bit more effectively. TSM will be. तेरी चैट में लोग बहुत बचते हैं. मेरी चैट है, मेरे पे ही जाएंगे ना, मतलब तेरे पे जाएंगे क्या? Wardell freed up by a curveball and a paranoia, but the tailwind updraft for the Bladestorm. स्टिंग स्पॉन्सर हुआ. जितना मैंने स्टिंग पिया उतना तो मेरे को बड़ा 3-4 कार्टन आ जाने चाहिए अभी तक स्टिंग को. जाओ रे उन लोग के उस पे टैग करो. बोलो कितना पीता हूँ. रोज पीता हूँ. तुम लोग देखते हो ना इतना स्टिंग में पीता हूँ. भाई कुछ जोमेटो भिजवा दे. स्टिंग पी के पेट भर रहा हूँ मैं. मेरा देखो जोमेटो भिजवा होता हूँ मैं. Wait to see if the defending team is going to do something aggressive, especially with not the best equipment. Here comes the lockdown. Are all the players in bootcamp? Yes, 3 of them are sleeping. One is, you can see, one player is playing. 3 of them are sleeping in like the bedroom. Chill. Chillax. Not gonna find anything, but Sabros, like you mentioned, does find the first kill. One knife available for Wardell. Really flirting with disaster. What mouse do you use? Exclamation mouse, Abhishek. Does go 1-for-1 overall. Win able to take down Drone after where he had initially triggered his run it back. Hazed is still up top. Potential for him to maybe sneak a kill. Despite does get down successfully. Will that be win condition it up for GenG? Still yet to be determined as Hayes finds another kill on the way in. A lockdown could be used defensively here. Win would be trapped underneath hell if that is the commitment. As they make their way forward, Cutler is able to find Win, and now it's just down to Kusta. What? Cutler? I don't know. Peak. Yeah, they get the kills required there. Pretty massive coming on through from these last two players alive. The opportunity for the lockdown. Using it didn't really need it. If they wanted to use the lockdown, they'd have to use it straight away. I think the biggest problem with using lockdown at that stage in the game is the fact that you have to wait so long for the lockdown to actually fully initiate. That entire time you're kind of chilling, you're not really taking space. उसको पहले डिनाई करना चाहिए था. Well, it's still pretty dangerous. ये भाई. इधर सोने जा रहा है? गोपी भाई गई सोने, ठीक है? तो अभी I am alone. 4 of them are going to sleep. He also is going to sleep. अपने भाई से शॉट आउट दिला. इतना आसानी से नहीं मिलेगा वो. पीछे कौन है? पीछे गोपी था रे. गया अभी. कौन गया? साहिब बूट के में. हाँ साहिब भी है, सो रहा है अभी. तू भी सो जा. मैं भी सो जाऊंगा अभी ये गेम के बाद अगर TSM जीता तो. गोपी था रे. बूट कैंप टूर करो. करेंगे ना, वीडियो बनेगा. Subscribe to Samurai Gaming YouTube channel and Samurai Instagram and the Samurai man himself. Follow everyone. They will reveal the bootcamp, teaser, everything. Shout out के लिए 150. मेरे से फ्री में shout out. भाई से उसकी डिमांड्स बड़ी है. Oh! What? What? Dude! What the fuck?
लेट्स गो टीएसएम। देखो ये लोग फुल कॉन्फिडेंस में खेल रहे, फुल 200% कॉन्फिडेंस। You saw how fast GenG tried to speed up here. I don't think they've made a really fast play so far. So respect things up because in terms of pacing, that's one thing that really haven't had a lot of change-ups. They've been. भैया एक शाउट आउट टू यू बजूका, भाई से शाउट आउट नहीं मिल सकता। ये क्या मार दिया बेंच, बेंच इजी ब्रो, आई एम टेलिंग यू ना, ये वैंडल अपने आप मारती है, तुमको मारने की जरूरत नहीं जो वॉडल के पास है, ये अपने आप मारती है। इफ यू वांट टू गेट बेटर बाय ग्लिच पॉप 2.0 इजी। देखो अभी क्या मारेगा, एक देखो रे, अपने आप मर गया वो, उसने मारा भी नहीं। ये देख वॉडल, ही इज एन ओके, कोई बात नहीं, दो मारे अपने, दो मारे, कोई बात नहीं। शाउट आउट टू हिम, कैसा अच्छा बंदा। तो स्पोर्ट्स टीम ने वैलो बना, लाइनअप दोनों अच्छे, एससी एंड सोल, यस लेट्स गो। थंबनेल चेक किया करता हूँ आफ्टर स्ट्रीम ब्रो, आफ्टर स्ट्रीम। TSM फैन, आई एम अ फैन ऑफ गुड वैलोरेंट। अगर अच्छा वैलोरेंट है देन आई एम फैन ऑफ दैट। ऑटो पे क्योंकि मेरा नेट हक 48 glitch pop, चुप रे। You don't want to get better bro, if you want to get better buy glitch pop, that's it. I'm a fan of wave. चल झूठे, चल झूठे। 1v1 again Kushta, critical situation. Oh, let's go. देखो फैंटम में आयन लो और वैंडल में लो ग्लिच पॉप 2.0 इजी, टू फकिंग इजी, बता रहा हूँ। अपने आप ही तुम लोग मारोगे, तुम लोग बोलोगे क्या हो रहा है, ऐसे माउस घुमा रहा हूँ बंदे मरते जा रहे हैं, एक्यूरेसी बढ़ती है। आई एम अ फैन ऑफ फुल एससी, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। I think you should opt for a C. वैसे ही नहीं जीत रहे रे, जो थोड़े बहुत जीत रहे वो भी हरवाना चाहता है क्या? मैं ऑपरेटर उठाऊं तो तू क्यों नहीं लिया? मैं तो लेना चाहता हूँ, अगर अभी आए मैं अभी ले लूं, बट वो आ ही नहीं रही। वैलोरेंट नहीं चाहता मैं उनकी मार्केट से कुछ खरीदूं, मेरी क्या गलती है इसमें? मेरे नाइट मार्केट में तो ली या नहीं, दैट्स द मेन क्वेश्चन। ली ना? Did you know Nitro will play Jet? No, I don't know. वो लोग ने बोला कि कोई कोई मैप में वो लोग जेट खेलेंगे, कोई कोई मैप में जेट नहीं खेलेंगे। They are going to try single duelist or no duelist. They want to play Valorant the CS style. साशा अगर देखा टुचुन चाचा थोड़ा बाद में आया कांड। मैंने तुमको बोला फैमिली फ्रेंडली है, तुम साशा का नाम क्यों लोगे भाई मेरी स्ट्रीम पे? Why are you like that? It's फैमिली फ्रेंडली। हफ्ते में एक दिन हम लोग मेरी मेंबरशिप खुलने के बाद ये सब बातें करेंगे, यू नो, मेंबरशिप ओनली स्ट्रीम यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे। मेरी स्ट्रीम अभी एकदम प्योर, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी नाउ, यू नो, ओके, एंड गुड थिंग्स। डाइसी मेरा फेवरेट था, अभी क्यों चेंज किया भाई? फेवरेट टीम छोड़ दी, इस टीम से निकाल दिया या फिर इसलिए? अच्छी दूसरी टीम ज्वाइन करेगा ब्रो। डेली ये ना बात। हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर देशमुख आफ्टर बाइंग दैट? You should feel good. What will Dicey do now? Join Indian team. They're going to go for the save. I think if they had kept more members alive in the last 3 rounds while winning, they would have had enough money banked up that they would definitely go for this. A 3v5 that doesn't look like great odds, but in terms of, you know, what they lose here, very little if they actually have a lot in the bank. Not the case this time around. GenG had to spend 2 ults for that one, but they go flawless, which is going to be great for their economy, and they need to do a decent amount to catch up here. They'll be on to 9. 2 away from catching up to TSM. As long as they keep TSM away from the 12, they have a good shot. As soon as TSM सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी कौन देगी लाइफ में? गंदा गंदा और नीच इंसान है तू बहुत, बट क्या करूं, मेरी तरह ही है या व्हाटएवर। इसके टाइम में इंडिया कोई प्रो प्लेयर आने वाला था,
इंडिया को जरूरत है क्या रे किसी की? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग रे? ऐसा छोटी मोटी बातें मत करो रे। क्या आने वाला था आएगा, हमको है क्या जरूरत किसी की? साला, हट। Losing 2 extra right towards the spike is not great. I mean, Kusta's completely. तेरे viewers तेरी तरह। I believe it's Mikhail who actually has to purchase for Sean. हेलो साशा ग्रेजर ट्विच, Wardell has brought another द क्लीन option to ट्विच। the field. तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ भाई? और ये मेरी क्वालिटी को क्या हो रहा है भाई? Some point in बाकी time, सब ठीक है? have yet to see. Another gun v gun round here. ऐस- Both of these squads as ऐसे अंधा हो जाऊंगा मैं बहनचोद। but this time it's actually Hayes who's playing क्वालिटी बजा दे। हाँ देख तो। in mid market. Could be first point of contact here between Sean and him. Owl drone is also being used to try to scout things out. Sean's position should be revealed. And Hayes will actually choose to still hold his ground here mid market. So wants to try to play बड़ा तो for बड़ा the पड़ा है ना, mid क्वालिटी map. टेंशन मत लो, सब कुछ अवेलेबल है। Potential A split here as well. You notice both teams have kind of given up control of A main as they say that Win is going to refine. निको को बेंच किया जीतू ने। So smoke disappears. And Cutler and Hayes have a bit of a crossfire, or did have a bit of a crossfire set up over towards mid. Drone playing close angle over towards B. They haven't heard anything on B for a while. There should be a bit of info coming on through, and there it is. They should know now for sure it's A. Pixel peek not successful. Sabrosa inside the garden has to back up by the recon bolt that forces him away. Water is alone inside. Oh, Sabruza goes insane. Wardell gets one more, and now he's got the angle locked up. Him and Hayes combining. Last player left alive is Mikhail, and no chance. Let's fucking go, bro. क्या खेल रहे हैं लोग? नो फकिंग फेयर गेम खेल रहे हैं। They don't give a fuck. Huge kills coming through. Wardell stepping up big time. 24 and 11. इसलिए तो एक और शामिल जा रहे थे। बोल रहा है। Players will you pick if you have to make a team in India? A previous round, and even then they lost 2 to the spike, which is just a bit of a blunder, an extra blunder. GenG backs against the wall, match point for sure, and GenG will be going to the losers bracket here if they drop this Kusa. Pimp is world's second best stopper. Spectre for win as well, and guns for. I am world's second worst stopper. Top fragger needs to step up. Wardell isn't going to hit the opening shot. पूछना मत world's worst stopper कौन है? I don't want to name. जो smart है उनको पता है। Different up, little plan B. Sean again mid map. This time the resistance would be Wardell, depending on if he wants to play this aggressively, and he has. He's on the. आप कभी मोहित वाकले के साथ खेला हूँ बहुत बार। मैं फाइनल्स खेला था राजस्थान टीम में, पता है क्या स्काई स्पोर्ट्स का? वो लोग ने मुझे बुलाया था, पूछा था खेलने के, तभी मोहित वाकले था वो टीम में। Drone is the one responsible though for making sure that B stays safe, and boy has he. Finds first blood. Hot hands also in the mix. Let's go TSM 1-2-0 boys. Not even gonna be required. Let's fucking go Sabruza baby. They are fighting bro. They don't give a fuck. They don't give a fuck. इमर सा अबे बधीर हो क्या? साई को क्यों बोलूंगा मैं? कितने बड़े एल हो रहे तुम लोग। मैं फैमिली फ्रेंडली बोलता हूँ, फिर तुम लोग ऐसे हंसने लग जाते हो। साई का नाम क्यों लूंगा मैं? मैं वर्स्ट की बात कर रहा हूँ, बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। Depends on how he clears this. Will be traded. बताओ प्लेयर्स के लिए देख, साई लोग साई लव ये लोग साई का नाम, लेकिन इनको पता नहीं है वर्स्ट में। मैं अपने आप को सेकंड वर्स्ट बोल रहा हूँ। लाइव देख रहे हैं, लाइव है। समझो समझो, सोचो थोड़ा सोचो। तो की थिंकिंग बराबर नहीं है। Let's go. Let's go. Let's go. जीत गई TSM। इंसान लिख रही है। वॉडल को ओपिंग विमने से इनको पता है ना मैंने क्या बोला था? आई एम बेटर देन टेंज एंड स्क्रीम, नॉट इन दिस गेम। दूसरी गेम्स में जो गेम वो लोग नहीं खेलते उसमें मैं बेटर हूँ। F1 हाँ, टेंस को बोलो किसी भी दिन आ जाए, F1 2020 में दिखा देंगे। वॉडल को बोलो, स्क्रीम को बोलो आने तो F1 में। हेलो रॉफिल ब्रो। पिंप आप जिम जाती हो? नहीं जाता हूँ रे, मेरा हाथ टूट गया था रे जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। डॉक्टर ने बोला जिम नहीं जा सकता तू, ज्यादा वजन नहीं डाल सकता राइट हैंड पे। तो चूतियों की तरह भागता हूँ सिर्फ मैं गार्डन में। वही एक बस बचा है। फीफा नहीं भाई, F1। आई प्ले रिच स्पोर्ट्स नॉट चीप स्पोर्ट्स।
we don't get to see the icebox. I think the Hello, big Jamin. factor is as we look through the replay package here, you have to अभी remember 103% that एनर्जी है. take all four बस भाई बस मेरी work to be done there for मेरे TSM. अंदर जितनी एनर्जी बची थी सब A lot हो of गई. these clips are Wardell, and F1 एंड बकचोदी. is not just talking on to him specifically, but just the 1v1 जी सर बस व्हाट्सएप कर रहा हूँ उनको F1. ओ भाई हमारा सीईओ आ गया भाई, अभी कुछ नहीं बोल सकते. Formal now, I can't say anything. F1 and बकचोदी. लगता है देखो कोई कोई लोगों के लिए, मतलब लोगों को भगवान किसी न किसी चीज में बनाता है, अच्छा. कोई पढ़ाई में रहते हैं, कोई गेम में रहते हैं. अभी लोगों की बजाने के लिए चलो बजो, अंधा बजो बजाओ, एक ही बात है, समझ जाओ. नेक्स्ट में बिजी रहता है इसलिए कम आता. कोई बात नहीं जैमिन मेरे भाई, तू आया बहुत बड़ी चीज है ब्रो. 3:30 बज रहे रात के, हालत खराब है. सीईओ नहीं भाई, सीओओ पर करो को भाई. मैं तो किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ, क्या करूँ. किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, क्या करे. मुझे डीएम कर, मैं तुझे अच्छा करूंगा कोई ना कोई चीज में. जो लोग किसी मैं नहीं बोल सकता स्ट्रीम पे यार. फक यार, मेरे को ये लाइन मारनी थी. फक, मैंने बहुत दिनों से डिसाइड की थी ये लाइन के बारे में, बट आई कांट. आई डोंट वांट. ना ना ना, बजो बजो. ये तो वो याद आता है जो एसेंट में साइन इफ 1v4 मारा और बोलता है बजो बेंचो और बजो. चाहे नहीं बजेगा तो कौन बजेगा भाई, मैं बजूंगा क्या. जो देखो जो जो उसको देखो हीरे क्या बोल दे, मौज करा दे भाई. आई विल डीएम यू. जिनका कोई नहीं उनका मैं हूँ. तुम लोग का कुछ इश्यूज है सब सॉल्व कर दूंगा. हमारे टीम स्पीक में बहुत बहुत लोगों की मदद की हम लोगों ने, तुम्हारी भी करेंगे. तेजी को फॉलो करो, सब ठीक कर देगा तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है. नहीं चाहिए. अरे मस्ती लग रहा है, सच बता रहा हूँ. मेसी का कोच, वंडर कोच. चिल चिल चिल, सबर करो भाई. मैं बजने में काफी ज्यादा अच्छा, सोच ले क्या बजाना है. सही है सही है. रेंज What sound experience would you like today? I'll have the fantasy pack. Good choice. And could you make it a Cloud 2 wireless? On its way, sir. भाई बैटल पास दिला दे फ्री में. बैटल पास टू यू मेरे भाई, एंजॉय कर. Sounds amazing. अब किसका मैच है, किसी का भी हो, मेरा हो गया भाई. जीजी एंड. इट्स टाइम टू स्लीप. अबे फेज वर्सेस स्टीवन, ये देखना था वैसे ये वाला मैच. जीजीएन कर देते हैं मेरे हिसाब से. फुल इग्नोर. बताना नहीं बता सकता रे, स्ट्रीम चल रही है, समझो भाई. को तो पता ही है ऑलरेडी कितनी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है. अब और करने की मेरे में हिम्मत नहीं बची. और मैं उठा हुआ हूँ, सिर्फ उठा नहीं हुआ हूँ. हालत खराब है, खराब है. कल शाम को 7 बजे से उठा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ 7 बजे से. गिव अवे कर दे बैटल पास का. मैंने खुद नहीं खरीदा है भाई बैटल पास, क्या गिव अवे करूँ मैं, बता. दिखाओ क्या तुम लोग को मस्ती लगती है ये सब चीजें. देखो कहाँ गया, ये गया क्या, चला गया.
देखो मैं खुद नहीं खरीदा हूँ भाई बैटल पास। ऐसे ऐसे मैच कभी है अभी नहीं खेलने वाले हम लोग। आई थिंक 1 मंथ तो नहीं खेलेंगे एटलीस्ट टूर्नामेंट, उसके बाद खेलना चालू करेंगे। वी गोइंग टू प्रैक्टिस हार्ड। क्या है ये? क्या टट्टी चीज है इसमें? क्या इसमें क्या 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 करूंगा मैं इसका बताओ? पंखा इतना गंदा लगता है मुझे ये देख के। मूड खराब हो गया। ये लेने का सोच रहा था। अच्छा ये लिया नहीं उस दिन। गेम में एक बंदे ने ड्रॉप दिया, इतनी गंदी लगी, इतनी ज्यादा गंदी लगी। अब तो आयन का ही वेट करना पड़ेगा गाइस। आयन और ग्लिच पॉप 2.0। इसके कलर भी बहुत ट्रैश है रे सच बोलूं तो। लाइक ये कलर के अलावा ये देखो, ट्रैश ट्रैश ट्रैश, लाइक सब कुछ ट्रैश है। टाइम पैरामिड का एनिमेशन टट्टी है। भाई अब सबको चिल रे, चिल चिल। प्लास्टिक्स की फैंटम है, सिर्फ फ्रंट को कोटिंग एब्रो नॉट गुड आई यूज्ड इट। हाँ वही मैं ये स्ट्रीम पे ही लेने वाला था, मतलब सब पब्लिक पागल होगी, ले लो ले लो ले लो। वो तो अच्छा था जिसके पेटीएम के थ्रू लेने वाला था वो बंदा था नहीं अवेलेबल। और जैसी गेम में गया पहले बंदे ने यही ड्रॉप दी पहले मैच में ही, इतनी गंदी। उसका रीलोड एनिमेशन से ही मेरा माइंड फक हो गया था, तो टर्न ऑफ हो गया मैं एकदम। नहीं होगा ये नहीं होगा ये। झूल रहा हूँ इमोर्टल 3 के इस पे झूल रहा हूँ कैसे रे 33 के बाद मारो। ये गेम का तो हाईलाइट बनना चाहिए। ओनी बेस्ट है। हाँ अभी ओनी है, अभी ओनी यूज कर रहा हूँ जब तक आया नहीं आती। जिस दिन आया ना ही सीधा ओनी को टाटा बाय बाय कर दूंगा। ड्रैगन ले लो। नहीं ड्रैगन भी ठीक ठाक लगी। अगर आयन आयन बोल रहा हूँ ग्लिच पॉप 2.2 नहीं आती तो मैं भी ले लेता ड्रैगन। ड्रैगन मेरे को आई थी बट लेने का मन नहीं किया। 23 क्यों प्लीज बताओ? क्योंकि आई लव माइकल जॉर्डन एंड वो उसका जर्सी नंबर। बस अब मोस्टली सब सोने ही जा रहे हैं। हाँ जाने वाला तो 5-10 मिनट में चला जाऊंगा। चिल ब्रो, चिल। रिवर में रिकॉइल कम है ऐसा कुछ। गेम में स्प्रे पैटर्न ही नहीं है भाई मेरे, क्या रिकॉइल कम की तू बात कर रहा है? ये गेम में रैंडम है, रैंडम स्प्रे पैटर्न इज रैंडम। चलो शूटिंग साउंड भाई मैच लगा ले 130 चालू नहीं हुआ अभी तक। देखते अगर कोई सेक्सी मैप लगा फॉर एग्जांपल एसेंट वेसेंट तो देखते हैं। एक मैप तो देख ही सकता हूँ मैं, वैसे भी देखूंगा ये ऑफ स्ट्रीम। पहचान कौन है मेरा? एक्स टीममेट या ट्राईआउट्स में मेरा टीममेट था। तुझे एरिक ज्यादा ही पसंद है लगता है। नहीं भाई मेरी पूरी स्ट्रीम देखते थे। नाइस नाइस।
that bitch so cause it really don't matter. I got my mind on my money, paranoid, they all look at me funny. Stressed out, so my liver stay muddy. Pipe down, you won't take nothing from me. I don't need nobody to love me. कनिष्क मेरे भाई सुन, मेरे पास बेस्ट प्लेलिस्ट है, मतलब समझता है, नॉट इवन कैपिंग, लाइक जो मेरी प्लेलिस्ट है वो इनसेन है, बट मैंने बजाई है भाई. पब्लिक पागल, पब्लिक पूछती रहती है प्लेलिस्ट दो, मैं प्लेलिस्ट देता नहीं हूँ किसी को, बट सबको पता है प्लेलिस्ट बाप है भाई की. प्लेलिस्ट पे नहीं आने का, बाकी किसी चीज़ पे भी बोलो, क्योंकि मेरे को इतने कॉपीराइट लगे कि अभी मजबूरी में मेरे को सुनना पड़ रहा है. और वो बंदा है, वही बंदा है जो भाई एरिक की है, जो जिसके पास वैराइटीज इतनी ज़्यादा है सॉन्ग्स की, और वो कॉपीराइट देता नहीं है. Welcome back there, everybody. I'm Alan. I hold shift down to Frio. With me, Kevin Averill Walker. We had an incredible 2 maps when we were just watching over TSM playing up. Portal stream करने भी आ गया. Dedication, bro. Londa, around I think he streams, उसका average is like around 6 से 8 से 10 घंटे के बीच में वो stream करता है. उसके अलावा वो practice भी करता है. I can't. They're putting out one heck of a PC sale where you can get your hands on pro-grade PCs at a very low price. Let me tell you, take a look at this one here, friends. nerdstreetgamers.com/gear. I mean, we're looking at an i7 in that, an RTX 2070. I mean, what else could you possibly want? This is a fully loaded PC, so definitely go over and take a look. And while everyone's in the market for a new PC, I think these two teams are in the market for a new play between Challengers 2 and 3. Both NRG and 100 Thieves come in with a fresh-looking face. So one of the sides is a full debut. I'm talking about 100 Thieves. It's a full debut for a new player. NRG, so a little bit of Android coming in already, but this is going to be a massive game because it's two organizations, two teams that have, maybe some cases similar to TSM, but they haven't quite had the success yet. They've actually made more Challengers events, and TSM's on a bit of a tear this time around, which just goes to show, by the way, how competitive Challengers 3 really is, because you still got LG in the mix. 100T versus NRG is going to be a big game here. Really excited to see how Ethan does, and for 100 Thieves, I think a lot of their fans have been waiting for this moment. And for NRG, again, they have to earn their way into this main event by working their way आज through काली से मिला, yes. qualifiers, in which they do a pretty clean job of dealing with the ऐसे ही competition. दो पेटी देती है ना. One tight match they had versus Demon Time that got them here, a 15-13 win on गेम चेक कर भाई, प्लेलिस्ट भेज. Again, we need to go over these rosters because there is a bit of ऐसे कैसे? here for 100 Thieves. I think everyone very much so expecting. Okay, let's go. Let's see what Ethan can do. On the other side for NRG, I'm not gonna lie, I was a bit surprised to see Android and Andbox kind of parting ways, and he finds himself on a very solid NRG team. Yeah, I think Andbox are going to be doing a bit of a rebuild after this one. Android was, I think, by far, and this is not a hot take at all, most people would agree, by far the best player. That was on a good night, UK. Thanks a lot for tuning in. A huge upgrade here. Som moves from the duelist position over onto Smokes, and he'll Discord नहीं चेक कर सकता अभी, stream के बाद ही करूँगा. Reply तो कर कम से कम. करूँ. Stream चल रही है मेरे भाई, करता हूँ. Chill करो guys, chill. With at least Ethan, possibly less practice. I mean, Ethan. हल्का कर रहा हूँ. One is that people are going to say, I mean, how long has Ethan been really playing? How much experience does Ethan have? Ethan's at least had a lot of ranked experience. We know he's been rated. We know he's been playing a lot of Valorant in general in terms of just overall play time. But the big difference is Ethan hasn't had a lot of time to specifically play with 100 Thieves. He hasn't scrimmed with them really long. This is going to be maybe a different experience. I don't have any concerns about Ethan's individual ability here. We know he's one of the most accomplished players in North America for Counter-Strike. We know coming into this game, he's going to be a fantastic individual player. The question mark will be how quickly does Ethan gel with the rest of the 100 Thieves roster? And it's not just Ethan, by the way. Nitro is changing positions. He's moving off Smokes, giving his position over to Ethan. And now Nitro is kind of filling into what is called apparently a flex position. So Volume खेलूंगा तो देखोगे क्या तुम लोग बताओ? Volume खेलने की बात सोच रहा हूँ मैं. You could even have Asuna moving over to Jet. I don't know who's going to be playing Jet yet. When it is change one player, Ethan, I know. I don't know they'll be playing. भाई मैं जा रहा सुने. Good night, Parth. They do one duelist, no Jet. They do एसी के बूटकैम्प के बारे में थोड़ा बताओ. क्या बताऊँ? मैंने मेरी फोटो Instagram पे मैंने फोटो डाली हुई है, तो you can see that. उसके अलावा somewhere I will
when you लाइक look at समुराई teams स्पोर्ट्स that are विल playing like रिवील ESL देयर or ओन वीडियो, Field तो or वही something देखो भाई, like उससे that, पहले आई कांट से you एनीथिंग have to keep in mind that to these have anyone. been built with a lot of competitive success really in the last 4 or 5 months. वेल आई एम खेलने का सोच रहा हूँ मैं The timing of this saying, मैं और okay, फैजी तो बाय कर लेंगे, और एक दो बंदे ढूंढ रहे हैं जिस get yourself into that को second close qualifier for the Challengers main event. You didn't have to play through the open quals this time around, and outside of a couple of tight games that you had versus both Luminosity and Sentinels, I don't think there were too many people looking at this 100 Thieves team saying, oh, they need to make a roster change. But you find a player like Ethan, if it makes your team overall better, you can't really fault them for the change overall. So we'll take a look to see what exactly we have for a map set here for this best of 3 battle between 100 Thieves and NRG. Again, this is still just an upper quarter final, but it's an interesting map set because we kind of expected to see a handful of bans. Mostly we're looking at 100 Thieves that they've hard banned out split. That will retain the case, but Icebox will be taken off the field for NRG. So map number 1 will send us to Haven. And yep, so that's going to be 100 Thieves keeping parity with what they've done in the past. They've played 0 splits so far this entire, VCT, this entire challenges run between challenges 1 to 3. They haven't played a single split. You've actually had NRG looking towards, they were mostly banning, I believe it was Ascent previously. Now they've shifted their primary ban over to Icebox. They were happy to play Icebox previously in previous Challenger events, and now into Challengers 3, they've kind of shifted gears a little bit, saying Icebox is not going to be the map anymore. We're going to be going to Ascent a little bit later on. So the good news for NRG is if they don't actually really want to play Ascent, the good news is they don't have to play until map 3, but they would have to kind of 2-0 here. Otherwise, it's kind of an issue. We know that 100 Thieves have been a very Ascent favored team for a while. They have an 88% win rate there, 7-1 so far over the course of challenges. Looking at Haven, we've got a 6-2, 75% win rate here for 100 Thieves. They've only lost to Sentinels, and obviously that one loss to Carpe Knockout where Nitro was away, but that's a while ago now, and that's kind of one loss you kind of write off. बताओ तो when I'm watching मजा नहीं आता फिर Plus a potential upgrade, you could argue. I think बैंड्स क्या है भाई, एनर्जी ने आइसबॉक्स किया, 100 Thieves ने स्प्लिट किया. Let's go. I mean, hey, if it works, it works, and well, you can't really argue with the results, at least from first strike, obviously. ठीक है भाई कनिष्क, ठीक है. On the other side, I mean, this is a team that when they initially got onto the scene, players and community members alike were kind of looking at it with weary eyes, saying, did they get the best roster available? And the results did obviously not speak for themselves early on through at least the first strike. But here, since they've been a part of the VCT, they've been playing really, really well. And that's a really big key overall. Outside of the 0-2 loss they had to Andbox in the open qualifier number 2 for the Challengers main event, they've been finding a ton of देखने में तो ठीक ठाक लग रही है भाई. कौन आया भाई मेरे से बात करने? हेलो ब्रो, क्या सीन है ब्रो? कल पार्टी किधर? स्ट्रीम चल रही है आराम से. अच्छा ठीक है. स्ट्रीम अब इतना लेट कर रहा है? और तू आज नहीं कर रहा स्ट्रीम मेरे ब्रो. तू पार्टी की बात मत कर. कल सबने देखा है तू कितना नॉर्मल इंसान है. अरे भाई ये देख क्या चालू है ये सब? क्या पता क्या बोल रहा है भाई. पुरानी बातें सुनूंगा नहीं भाई. हाँ क्या पता क्या बोल रहा है. खुद साला जो ए भाई. अरे दे भाई स्ट्रीम चल रही है, थोड़ा अपने तक रखो. 1 घंटे के अंदर के बाद बात करेंगे. बाद में करते. गुड लक. मैं आता हूँ. किधर भाई कुछ हाँ कुछ वो करके अभी तू किधर जा रहा है? गुड लक. हाँ अरे इधर 10 मैन खेल रहे हैं लोग. CS कभी बोलता है वैलोरेंट शिफ्ट होना है, कभी CS खेल रहा है. सब खेलते हैं आजकल तो. अभी आ रहा 3 गेम मस्त आ रहा है क्या? सैटरडे को आ रहा है 20 मैन. मैं पूछा फायर अप को. अरे भाई मेरे को तो कल तुम लोग कुछ और बोल रहे थे. कौन जाएगा? ये तो सब जा रहे हैं अभी. क्या मजे करो जितनी जिंदगी बची है. हाँ तो तू आ जाना. तो तू क्या टेंशन, तुझे चाहिए तो पिकअप कर लूंगा मैं घाट को चेंबूर से, नॉट घाट को पर. क्यों भाई उतना तो कर. जितना पिकअप ड्रॉप सुबह सुबह हो गया. जाएगा वो भाई जो 5 बजे हम लोग गए थे ना, ट्रिपल सीट घूम रहे हैं बैंडचोद नेहरू की गलियों में. कहाँ जा रहे हैं पता नहीं. रो एक बंदे को पूछ रहा है चाय किधर मिलेगा. पहले डर रहा था फायर्ड अप कि भाई बैठू गिराएगा तो नहीं, और फिर जब एक राइड हुआ, अरे हम चलना वापस जाते हैं ब्रो. भरोसा नहीं है क्या यार? कम ऑन यार. भाई मेरे को तो लगा और उस स्काई वॉक के नीचे जाने वाले. What the fuck man? ना भी भरोसा नहीं.
फायर अप तो सोबर था। अरे मैं नॉर्मल था। नॉर्मल एक सुन ले, नॉर्मल था। हाँ ये नॉर्मल था, हाँ। वॉश बेसिन नॉर्मल नहीं थी। हाँ वो वॉश बेसिन का थोड़ा सीन हो गया, पर ठीक है, क्या वो कर सकते। नॉर्मल नहीं थी, बाकी सब कुछ। उ- निकल गया। वीडियो कॉल में तो फायर अप सिर्फ यही बोलता था, मैं नॉर्मल हूँ। अरे भाई वीडियो कॉल में कब बोला मैंने? हाँ अरे तेरा 4 वीडियो बार। तो बना है, ए लेकिन भाई नहीं डाला है वो अब अभी अब रुक ना, उधर। विम का एक नहीं डालूंगा, पे रुक डाला है। जा। अबे विम के नहीं, डिस्कॉर्ड पे डालता हूँ विम अबे को। विम्प ने सुबह 4 बजे 4 बार वीडियो कॉल किया है। अबे उसने इंस्टा पे भी तो डाला है वो तो विम्प छोड़ ने। दो, हमको पर्सनल वीडियो कॉल किया है 4 बंदों को व्हाट्सएप भाई ग्रुप पे। माँ वो कसम। वीडियो कॉल में तो कुछ सेव थोड़ी ना होता है, क्या हो रहा है हो गया, अरे जिसने मैं देख लिया बता देख रहा लिया। हूँ। हाँ घोष ने देख अच्छा लिया सामान क्या हो रहा था हाँ उधर। इंस्टा पे तूने क्यों डाला है स्टोरी? इंस्टा पे मैंने सिर्फ फायर अप का डाला। हाँ तो वही वाला तो तो वो बात हाँ कर तो रहे क्या हैं। हो गया, फायर अप को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल था। चल भाई क्लाउडा मेलविन बुला रहा है आपको। उसकी माँ का भोसड़ी का एडिट कर। अरे भाई ये भाई 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 मैं जाता हूँ भाई, तुम आता हो ये करते Sound muted. हो। साले उसकी माँ का इसकी माँ का चालू हो गया वो। हेलो प्रणव, ये SKRRR कौन है? ये रॉसी? दैट इज लॉजिकल। You could argue maybe हेलो Android प्रणव, is the हाउ आर यू, हाउ आर यू? but it just goes to show that Android has had pretty consistent performances across the board in all the official games. Paste T1 लगाओ, nope, There's a decent not amount going to of watch that. some tape on them. There's at least stats on them that everyone can go and look at. And फर्स्ट मैप इवन है, इवन देखते हैं ना, इवन नहीं देखा हम लोगों ने, बाइंड एंड एसेंट देखा, लेट्स वॉच इवन एंड देन GG गुड नाइट स्लीप। Do Android things at the end of the day. We are just kind of dealing with a situation where we're trying to make sure everyone can get successfully onto the old patch and get into lobby. That's apparently a little bit harder to do than we may have figured initially. So instead of us continuing to talk on about this 100T Energy podcast we're putting on, we'll send things just to a brief क्या break. बोलते हैं रे? Coming back as soon as our teams are ready to go into Agent Select. Don't go too far. 100 Thieves, NRG, map number 1 coming up right after this. Chapar, 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 chapar. Is it allowed to watch party, bro? मैंने परमिशन लिया, यू नो, आई हैव अ परमिशन लेटर, टेंशन नहीं। अभी तक लाइव है भाई, देख रहे हो कितना डेडिकेशन है टुवर्ड्स द गेम। आई हैव सो मच डेडिकेशन। टीम्स आर गुड बट जीटी ऑन अनदर लेवल। मेरी मर्जी। अच्छा हूँ, आप कैसे हो? ऐसी ऐसी कोई नई टूर्नामेंट अभी नहीं, बूट कैंप पे जाने के बाद ही खेलेंगे आई थिंक। साई ने बोला है ऐसे, आई थिंक जब मैं बूट कैंप के, आई डोंट नो कंफर्म क्या सीन है। क्लाउड और बैड लव के साथ खेलो ना 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 ना। मेरे को लगा रॉसी वीवो साथ में TS में क्या करते हैं। व्हाट? हमारे TS में कहाँ है? को देख के तू कहाँ है? SKRR कोई भी नहीं है भाई, क्या कौन सा नशा भाई? ऐसी को जिता दे बस भाई। व्हेन आई प्ले ऑन 120, यू नो, 120 गियर। रिट्स वाले में, अरे मैं थोड़ी ना रिट्स वाले में हूँ। 1 मिनट इतना नहीं, सुबह 4 बजे इतना नहीं चाहिए भाई। ये लोग ने ब्रेक पे क्यों गए रे भाई? छोटियो, ये लोग ने मुझे क्रिंज दिया, मैं तुमको क्रिंज देता हूँ। ऐसे दे, इधर जाता हूँ स्ट्रीम चालू करने से पहले, ऐसे क्लिक करता हूँ। पहले ये आता था, अभी ये आने लग गया है। कौन सा गाना सुनोगे बताओ? और कोई नया प्लेयर आया राजस्थान में? आई डोंट नो। कॉग्निटो टैब क्यों ऑन है? कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं कुछ दिखाना नहीं चाहता ऑब्वियसली। सूरज हुआ मध्यम, कृष्णा भजन, जन्माष्टमी। भाई 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 भाई
The PUBG game song? Wait, what? What the fuck is this shit? ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਚੱਕਦੇ ਆ ਟਾਟਾ ਸੱਜਣਾ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣਾ ਬੈਲੀ ਤੋੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬੇਬੀ ਜਸ ਮਾਨਕਾ ਸੂਟਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਸਾਰਾ ਟਾਉਨ ਟਾਉਨ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਰੌਣ ਕੀ ਸੁਵਾਦੀ ਮਿਲੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਈ ਸਰਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗੜੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਮੁੱਕੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਚੰਗੀ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨਾ ਤੇ ਜਿਰੂਨ ਸੀਨਾ ਬਿਨਾ ਕੋ ਖਾਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਨ हाँ चौथी भैया जी, हाँ चौथी। कितने घंटे की स्ट्रीम थी मेरी? हाँ चौथी भैया जी, भैया जी, भैया जी लग गए लोड़े। कितने कितने घंटे की स्ट्रीम थी मेरी? बर्बाद बहन चो 3 घंटे। पबजी सॉन्ग बोला था। रिपोर्ट करो रे वो एनसीएस के चैनल को। बहुत स्ट्रेस है रे मेरी लाइफ में। होगा भाई। वही है रे नितिन, मेरा साथी। नाउ यू नो व्हाई आई एम नॉट अ मेंबर हियर। छोड़ दूं क्या? द थिंग इज, देखो यूट्यूब ने ये बोला है कि योर स्ट्रीम विल नॉट बी इन एल्गोरिदम अगर इफ आई प्ले कॉपीराइट क्लेम सॉन्ग्स, तो उसके लिए भी मुझे बंद करनी पड़ी। वॉज रॉसिन सीएसगो, यस। कॉपीराइट नहीं आएगा, क्या पता भाई। मेरे को वैसे 6-7 स्ट्रीम से आया तो नहीं है कोई कॉपीराइट। पुराने कॉपीराइट्स आ रहे हैं, लाइक 80। अभी मैं 111 पे हो, तो 105 के बाद मुझे कोई कॉपीराइट आया नहीं है। देखते हैं, लेट्स सी। अपन तो सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। मैं सुन रहा हूँ भाई, एरिक के गाने सुन सुन के थोड़ा भी सर दर्द दे रहा है। ये चालू नहीं होने वाला भाई, चूतिया काट रहे हम लोगों का। मैं भी अपना चूतिया कटवा रहा हूँ। चालू हुआ तो बताओ।
अब मैप है रे ये हमारा भाई इसमें मेरा भाई खेल रहा है करी वन ट्रिक वाइपर मेरी तरह Fortunately for Zachary, no sightline caught him out just yet. He is क्या मारा taken down from down low. The B side, it's not free. You open new channel and start streaming, will probably get join button there. Down over towards Snowman, so the Vipers अभी 10 man custom खेलेंगे खेलेंगे. respect here. Oh, he actually sees over Who has the thickest car in cricket? याद हूँ मैं. on to days as the smoke goes up. Marv looking to get aggressive. The kills are being traded back and forth. Finally one taken off the board from FaZe. Kind of a kill. ये एंगल से तो स्टील की याद आती है. एंगल लेता है पिट जाता है. Again, T1 flirting with that clock and not in the best way, running it down to almost the last seconds. I'm not too sure what FaZe have as far as an answer goes for this. Yeah, Baby Bay definitely doesn't want to start pushing it with the operator. Now with Corey down, almost making another as Raucus takes some damage. The rifle and an op fighter playing out towards yellow. Smokes go down. That's the operator. Spider बोलते, Spider OP बोलते. Woo, let's go Spider. It's also the adaptation. Like that's the first real fake T1's run this game. करी मार रहा है भाई वाइपर से. What the fuck? करी carrying. So they did a great job putting that pressure on A. T1 is playing double sentinel and FaZe is playing single sentinel. They double back. Zachary gets busted by a great little. You can play your whole stream on that channel which you didn't get copyright. But no मेहनत. नहीं नहीं ये सब करने से क्या मतलब? Making changes and it's working. They're on a 4-round winning streak right now, and FaZe are starting to fold a little bit. Team delete करने से कोई loss भी हो गया क्या? नहीं. But I think it's not allowed. Maybe I don't know. Yeah, that's a tough one. But again, it could quite possibly be another fake, and you get a bit of information. That drone is just a legend. It's just not dying, bro. It gets a dart. It gets 2 darts off, I think. And quite a bit of information. Not only spotting out the jet, but knowing the arsenal that is available as the sheriff goes down on site automatic. In the angle, though, Boombot looking to get into the action. Boombot को क्या हुआ था वो? Follow it up. That's unfortunate for. I think we can all agree Sage is into sentinel. क्या? Yeah. कोई TH पे है सब म्यूट करके बैठे हैं. So here it is. Corey actually gonna pop that one now. There's a kill coming out. That's Marv with the hero rifle. Spider able to trade it back. No stopper. ये T1 वाले अच्छा खेलते हैं लेकिन ये थ्रो है रे. देखना ये स्मोक हर राउंड यहाँ पे हर राउंड वॉल यहाँ पे विदाउट ओमन यार. आई डोंट नो मैन. आई डोंट नो. ये फ्री राउंड इतना क्लोज गया क्योंकि जस्ट बिकॉज the dude is they play without omen. Why do they play without omen? क्यों ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? I'm telling you easy. डायनेमो और मॉर्टल के ऐसी. अरे तो डायनेमो किधर, मॉर्टल किधर और ये विम्प किधर? कुछ है कि नहीं भाई? What the fuck? This game, he's really been like the breadwinner, and now that Spider and Scoodle are kind of more in tandem, they're starting to come alive as well on the scoreboard. Yeah, they're starting to come on, and you mentioned it, saying the adjustments being made. I mean, even more of a round of applause or props for adjustments on the fly. देखो फिर से वही डाल रहा है. अरे क्या है इतना, ये क्या वन ट्रिक गेम है भाई? I don't know man. And they're looking to take the next 6 now, mixing up the pace quite a bit. It's going to be Spider right behind the drone this time around. Ain't shells gonna rain down some damage over towards yellow. Unfortunately, not going to find too much. ये तो मतलब एकदम स्टबन नेचर हो गया रे ये. अरे गोपी C9 गोपी भाई. गोपी देख ये वाइपर हर राउंड ये वॉल बनाता है और ये मिड पे स्मोक करता है. बिना ओमन के लोग खेलते हैं हर राउंड. ये एक ही चीज किया. पूरे 12 राउंड हो गए. ये 12th राउंड है. 12 के 12 राउंड उसने ये किए. क्यों ऐसा करते हैं लोग गोपी? क्यों? आई नीड एन आंसर. ज्वाइन बटन चाहिए या नहीं? ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं ज्वाइन बटन चाहिए नहीं. ऑफ कोर्स चाहिए. Crore versus 1000. Exactly. Oh, Curry.
मेरा वन ट्रिक भाई। ओ, अपने को फॉलो कर रहे हैं वो लोग। अपने को पूरा नहीं फॉलो कर रहे थे, लेकिन गोपी देख बताऊं क्यों? क्योंकि ये लोग जीत रहे हैं और हम let's focus on the match, guys. Let's focus on the match. Don't talk too much. Let's focus on the match. मैं लूंगा तेरी 8,000 की मेंबरशिप, टेंशन नहीं। 8,000 की रखूंगा ही नहीं रे। मैं गंदा हूँ, हरामी हूँ, प्लस 100 चीजें और हूँ, बट मुझे पता है कि कितनी 8,000 वाली रखूंगा ही नहीं मैं। अपनी बेइज्जती खुद करानी है। योर कॉमेडी पर्सन। क्या कॉमेडी? इट्स ह्यूमर ब्रो, नेचुरल है वो। 6-6 कर दिया उसने, एक ही लाइन एक ही स्मोक डाल के। टैलेंट चाहिए, ऐसा टैलेंट। यहाँ भी ऐड, जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऐड। ये चालू हो गया, ये देखते हैं। अच्छा मैप, वेलकम टू द बेटर वर्ल्ड। गोपी सर स्ट्रीम, गोपी को स्ट्रीम करना ही पड़ेगा, बूट कैंप पे करेगा वो। 15 तारीख से एक्सक्लूसिव ओनली ऑन बूट कैंप। गोपी विल बी अवेलेबल। C9 गोपी इज बैक विद इंडियन टीम। विम के साथ होगा वॉच पार्टी। विम के साथ तुम बहुत कुछ करने वाले हो, मुझे डर लग रहा है। अभी से मुझे ऐसे लग रहा है वॉयलेट हो रहा हूँ मैं अंदर से, यू नो। This is going to be 100 Thieves once they get into the gun rounds, not really thinking too hard about the operators right now. They are going to be playing more of, full rifles, using a lot of utility. They've got a lot of extra utility energy straight away on towards B. Camera from Steel should spot this one out. You already see the smokes coming. Eagle bhai. Nearby is the rest of 100 Thieves with the aftershock as well. That actually does force the spike to have to fade away. फेक किया रे ये भाई, ये लोग ने स्पाइक फेक किया। मतलब फेक नहीं किया, लोग प्लान करने वाला था। वो ये वाला प्लान करने वाला था, और ये लोग सी और गैराज से बैकस्टैप करने वाले थे, बट प्लान चेंज कर दिया क्योंकि इनके पास कंट्रोल था। स्मार्ट। आई विल बाय 300 वाला मैक्स मेंबर। थैंक यू मैन। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेंबरशिप का अभी बहुत टाइम है। Official kill here in the VCT, but it is an even 4v4. And now it comes down to Steel. His timing, could it be good? No, not the case. Sam and EU able to find one. And well, नाइट्रो ब्रीच खेल रहा है। 100 is playing single duelist with Race. This is EO attack boys. Who is more fat, Sai, Gopi or you? भाई इंस्टा पे जाओ, मेरी स्टोरी पे क्लिक करो, देखो सबको दिख के पता चलेगा कौन ज्यादा मोटा है, ठीक है? ये सब सवाल पूछो मत, एकदम अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये अच्छी बातें नहीं है ऐसे सवाल पूछना। I will buy 29, thank you. इतने को काट ये no kills in one ult charge after dying early, so slow start for Android so far. It's just the one round, so 5 दिन में आएगा ज्वाइन बटन। तेरे मुंह में, तेरे को जो चाहिए वो ले तू। तुम सर ब्लॉगिंग चालू करो भाई, मेरे को नहीं आता। आज साए मोबाइल लेके घूम तो रहा था, बट मेरे से नहीं होगा वो। मेरे से नहीं होगा वो, जैसे मोबाइल लेके घूम के बातें कर रहा था, मेरे में नहीं है वो टैलेंट। वो टैलेंट चाहिए उसके लिए। भाई करे रे, सबर करो। From 100 Thieves over towards A. In fact, they're so interested. Nitro's going to be rotating over. He was thinking about it, but after 100 Thieves have maybe confirmed that lobby is clear, hearing some footsteps now as well. Nitro's got to say, you got to come over. Daps would potentially come up for a large number of picks. He's got 150 HP. I don't think he should lose this one. He won't. Double kill here. Nitro on 1 HP. He'll get cleaned up, and the NRG should be able to walk away with 4 alive. Got to admire the creativity from 100 Thieves. montages वीडियोस पे रिएक्ट करो, करेंगे। मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी 111 स्ट्रीम्स की है मैंने, मेरे भाई जस्ट होप, और 111 स्ट्रीम्स में से 100 स्ट्रीम पे मेरे को कॉपीराइट क्लेम है। तो आप समझो थोड़ा क्यों नहीं करता मैं अभी वो। रेशियो कुछ ज्यादा ही गंदा है।
going for an exit here. Just looking for timing, you know, timing to see if someone from NRG was going to walk away and not check as they run out, maybe with a knife out or something like that. Nitro isn't going to get lucky. Here's the real round, though. I think now this is going to be what we've been waiting for as an audience. I think it's the expected gun round for 100 Thieves. Okay, they lose the pistol. Doesn't go their way. अभी तो मेंबरशिप चालू नहीं हुई यार, शिन सही बोला यार. As was said, but the real test is going to be how do 100 Thieves now handle this actual gun round, and it's समुराई स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, उसको वाइट टेक्स्ट कर दे. मेरे को आता नहीं है रे, करूंगा कल तक सब फिक्स कर दूंगा कुछ रहेगा तो, क्योंकि बड़े हैवी ड्राइवर बेटे. बाकी 11 क्यों छोड़ी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यूट्यूब ने बोला तेरी वीडियो रिकमेंडमेंट में नहीं जाती है, लोगों को पता नहीं है कि मैं करता हूँ. टैप्स को क्या है, देख नशा है क्या रे ये, व्हाट द फक. नाइट्रो को फ्लैश करने नहीं आता, उसको ब्रिज खिला रहे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग इट, बट इट डजंट नो हाउ टू फ्लैश प्रॉपरली. परफेक्ट फ्लैश, लाइक डोंट नो हाउ टू फ्लैश, बट हल्का सा फेल हो गया वो फ्लैश. ओह ओ गया, बट हो जाएगा डिफ्यूज. हो गया, हाफ कर दिया था, हो गया. आई एम स्टिल टेलिंग यू, न्यू चैनल खोले बैकअप के लिए. नहीं, अरे ये चैनल थोड़ा तो ग्रो, फिर न्यू चैनल खोल देंगे, खबर करो. आपका भाई, मेरा भाई 11th स्टैंडर्ड में. सारे मैच फिक्स्ड है. ये शैंक्स अंडर 18 है, नहीं 18 का ही है. Onto Daps early on. I thought Daps was maybe going to get out alive. The timing looked like it was going to be in his favor. He only dropped the Spectre, so not the worst death that I think NRG could have lost there, but enough that the 4v5 ends up being too much for NRG to come back from. And here we go. 100 Thieves will pick up the third round here with the gun round, but at a pretty big cost. Because 100 Thieves are playing A retake because they have breach ult मेरे हिसाब से. उसके अलावा कोई रीजन है नहीं इनका खेलने का, सच बोलूं तो. He's just trap. TT trap लगा के यहाँ, I don't know. I think it's weird. कोई भी टीम CG तो पुश नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता. But पता नहीं, मे बी लेके पी के लिए बचा के रख रहे हैं. I don't know. ये लोग It's double Guardians, by the way, on Hiko and Ethan, so I don't know if that's going to affect their retake ability, and it is going to have to be the Rolling Thunder retake now, Steel by his lonesome. देखते हैं रिटेक कैसे करेंगे. आई वांट टू सी दिस. आईपीएल में खेलो. नहीं, स्पोर्ट्स में ट्राई नहीं कर रहा हूँ. टाइटल छोड़ दे, अभी जाने दे. कंटिन्यूटी वाले एक दूसरे मेरे को देखना रिटेक कैसे करते हैं. एक सेकंड रुको. ये अल्ट ने तोड़ दिया उसका ट्रैप. साला हीको देखो कहाँ खड़ा हो गया पीछे इतना. अरे आजा भाई, पूरे नेट्स है रे. आई थिंक दे हैव अ सेट प्लान. यहाँ पे रेज विल नेड ए शॉट और यू डबल. यस सर, लेट्स गो. दे हैड अ प्लान. आई लाइक इट. ओह नो. चल गुड नाइट. नेक्स्ट टीम में आके सदा ये गुड नाइट मैन. गुड नाइट. थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन. वो लोगों ने ब्रिज के अल्ट पे खेला और अल्ट से लाइक पूरा साइड पे मारा उसने, और अंडर 11 बचा था. वहाँ पे ओमन का फ्लैश आया, हुआ का नॉर्मल जो रिकॉन डार्ट होता है वो रहता है, और उस पे ए शॉट पे नेड किया, क्योंकि कोई होता है ना लाइक ब्रिज के फ्लैश अल्ट के पहले एक आधा किल मिल जाए, तो उसने ए शॉट नेड करके डबल सैचल मारा. इनसेन मैन, इनसेन. And just jumping straight into the spike is something that NRG wasn't prepared for. They didn't think that Steel was going to stick it, and they get But हाँ, ये एनर्जी को नहीं पता था कि वो शायद स्टिक कर देगा पूरा का पूरा. लाइक हाफ करते हैं बट उसने फुल कर दिया. बट एनर्जी वाले भी रेडी थे. लाइक फॉर एग्जांपल कैसे बताऊँ, उनको पता था कि ब्रिज के अल्ट से रीटेक होने वाला है, तो वो लोग पहले से ही पीछे से खेल रहे थे कि कोई साइड में मत खेलो, क्योंकि मतलब नहीं है वो करके. इधर देखो भाई क्या कर रहे हैं ये, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, क्या कर रहे हैं. वापस से अल्ट. अभी एक्चुअली देखने में मजा आएगा कि बिना अल्ट के कैसे रिटेक करते हैं लोग.
A very defensive safe trap. I mean, look at the other trap over onto A link. That's a very तो 1 से लाइक इसने बोल दिया coming through from Steel. स्टील भाई को किल तो मिलेंगे नहीं. Sensing a little bit of danger over towards A. They heard the gunshots and the rest of the rotations come on through now. Look, they're the only two players that are here, and they're the only two players that will be. मर गया वो स्पैम में. GG हो गया. Beyond that, Steel doesn't just get taken down. There was also a significant amount of damage that got into Nitro. Yeah, this is the problem. वो अल्टी तो ठीक है बट बिना अल्टी के That will be denied. Information that there are players over. I don't think this is possible. इसका एरो आएगा. एरो आने वाला है. एरो आया. बीच के फ्लैश आए लेकिन शैंक्स ये रीटेक नहीं होना था. डैप्स ने हगा है. डैप्स व्हाई इज डैप्स स्पीकिंग? उसका प्लांट है. एनर्जी गंदा खेला एट द एंड ऑफ द डे. ये रीटेक नहीं होना था. तेरे गेम से ज्यादा तेरे को देखने में मजा. ये नहीं, गलत खेला. बहुत ही गंदा खेला. बहुत ही गंदा, मतलब नेक्स्ट लेवल गंदा खेला. जब 1v2 हुआ था तभी उसको छोड़ देना चाहिए था. पहले पीछे हो जाना चाहिए था. लाइक टाइमिंग पे खेलना चाहिए था डैप्स को. और असुना ने ओवरप्ले किया. उसने फ्लैश में मार दिया एक बंदा. इज नॉट गुड. आई डोंट नो व्हाई. अभी तो इसके बाद 2 अल्टी आ गई तो इसलिए अभी तो खेल ही सकते हैं. भाई नाइट्रो क्या खेल रहा है ब्रिज पे. लेट्स गो. NRG after another plant just cannot win in the post plant. These post plants, at least 2 in a row now, have just been really unfortunate to see. You just think about what the difference of the scoreboard could have been with. Talk about 100 Thieves sticking the first defuse, winning a last-second take here, and also denying, like you mentioned, over towards Biasana. Oh my goodness, how has he avoided being seen by anybody from NRG? Gonna go straight to a showstopper. Alt खोल दी. Oh, Android हो. Eventually comes into play, but it is NRG who comes over. क्या घुमाता है भाई बंदा. I love असुना रज. क्या घुमाता है वो भाई माउस को. शेकी शेकी एकदम. ऐसे से अच्छा गन पावर किसी का नहीं था अंडर टीम पे. नहीं रे. चुप रे. चुप रे. भाई ने लर्क कर लिया. डैब्स भाई ने. लेट्स गो डैब्स भाई. लेट्स फकिंग गो. वैसे तुमको पता है देखो ये स्टील जो है ये रीटेक के लिए डाल रहा है. ये जो केज डाल रहा है अब तो वो जिंदा नहीं है फर्क नहीं पड़ता. बट ये जो केज डाल रहा है सिटी के लाइक बल्ज डाल रहा है इन टर्म्स ऑफ आउटसाइड. ये देखो एकदम इधर मैप में देखो ताकि वो उसके थ्रू इजीली बाहर निकल पाए. क्योंकि कई बार होता है कि सिटी चोक हो जाता है पूरा सिटी का एरिया. नाइस शॉट. नाइट्रो भाई. नाइट्रो इज हिटिंग एवरीथिंग. क्योंकि फटी हुई है पहले से ही पीछे की. देखो देखने आएगा एक बार तो और. एक बार तो और देखने आएगा आई थिंक. ओ नहीं देखने आ रहा. ओ गिर गया नीचे. Oh no 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 no. इको ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया भाई. Why is it easy for CSGO players to play Valo? Because of a lot of reasons. It's a 5v5 game. सबसे पहली बात तो ये है. The 5v5 game bomb plant bomb defuse के ऊपर है like basis पे है. वो जो overall structure है is similar to CSGO. Like the way of playing default ये सब easy पड़ता है. और भी reasons है but most common one. That's one trick new player who can adapt to new agents and meta. इको थोड़ा पेट कर रहा है. ज़्यादा ही रुक गया रे इको उधर. टाइम कहाँ था इतना रुकने का. ये लोग मिड एग्रेशन पे है पूरा. बट एनर्जी वाले भी काइंड ऑफ दे आर आल्सो प्लेइंग रियली. ओ हो गया. हो गया रे. हो गया. हाँ ये तो ही हो गया. बच गया. EEIU बच गया. EEIU ने अगर इतने नहीं मारता तो उसने 3 मार दिए फिर भी. और मैकेनिक्स भी. अरे भाई जस्ट होप. R6 is very different. Very 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 different
then CSGO. Looking for something better than a Spectre. There will be something better than a Spectre on the ground once he realizes the entire mid area is clear. At this point, he's got to know it'll be A plant or C plant. He's just waiting for the retake now. इसमें थोड़ा डिफॉल्ट स्टाइल, मैप का ओवरऑल स्ट्रक्चर, गेम का ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ टीम गेम के मामले में भी CS ओवरवॉच को कंबाइन करो, वैरो रेडी। ओवरवॉच तो पूरा ही अलग था भाई, उसमें बंदे मरते नहीं थे, यू जस्ट रीस्पॉन एवरी राउंड, मतलब एवरी सेकंड। ओवरवॉच तो अलग ही गेम था। ऐसे नहीं होता ना मेरे भाई। अभी अल्ट मारेगा ब्रो। हाफ कर दिया, ठीक हो। आई थिंक टाइम बिल्कुल नहीं था। But still, at the end of the day, only buying 2 ghosts, you're probably still smirking a little bit if you're a 100 Thieves fan off that round. Yeah, I think that's a really I think टाइम नहीं था इसलिए इको ने स्टिक किया। टाइम नहीं था, बट बचा लिया भाई ई ने। ई भाई ने निकाल के बचा दिया इन लोगों को, नहीं तो ये जीजी एंड था, बहुत ही गंदा एंड था ये वाला तो। This was 2 GG. Nico should have pulled that ult early. नहीं रे, HP देख रे सामने वाले की, ऐसे नहीं होता रे 1v1 सिचुएशन में। Everything is not white and black, my friend. एनर्जी अच्छा खेल रही है, हाँ अच्छा खेल रहे हैं। 100 भी अच्छा खेल रही है। They have a plan. और ये kill is not वेट करने वाला है क्या इनको रीटेक में? लाइक ये सोवा यहाँ क्यों खेल रहा है 100 थीव्स का? क्या अल्ट के लिए खेल रही है? आई थिंक ये अल्ट के लिए खेल रही है, जस्ट प्लेइंग फॉर द अल्ट। इको अगर सी आए तो सी पे अल्ट मार देगा। ये फ्लैश करने वाला है, फ्लैश करने वाला है। ओ शी, ओ शी, नहीं 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 नहीं, हॉर्नी हो गया नाइट्रो भाई। हाँ हॉर्नी हो गए नाइट्रो भाई, हॉर्नी हो गए। वो इनसेन था रे, अच्छा प्ले था। Give the benefit of both of you, उनको तो MF4 होगा। यस एग्जैक्टली। Let's go, let's go. Largely wait until they find success from the front. Paranoia comes out. Oh, and oh my goodness, Android gets baited by the shadows. What in the world happened right there? 1-for-1 exchange. Time now again becoming a bit of a problem. Android. They're on the full surround. Tom. Right on top of the spike site. We'll see one play. Android सॉम के अल से बेट हो गया। एंड्रॉइड सॉम के एल से मरा। बिट व्हाट? इको नहीं है, टाइम नहीं है। अबे बेट नहीं था वो, बधिर ने टीममेट बेट हो गया। ब्रो व्हाट द फक ब्रो, टीममेट बेट हो गया ब्रो। सॉम एंड्रॉइड का काट दिया। What the fuck? Like what is going on? And at the exact same timing, Ethan crosses with util out, and Android dies them. So that is super unlucky, but also at the same time, like, what is going on with this NRG squad? If it wasn't for the fact that time runs out there, Hiko had that. I mean, Hiko finding the last kill, didn't have time to defuse, but a huge play regardless, and 100 Thieves keeping every single round close. Now, they are down by 2, but there's been a lot of rebuys here. That's why you look at... तोड़ दो रे दरवाजे, क्या कर रहे हैं ये लोग भाई? इतने दरवाजे क्यों तोड़ रहे हैं? गेम में काम नहीं रह जाता। I am stuck in Diamond 1 and Plat 3. इसका तो मैं क्या ही सोल्यूशन दूं, तू काम नहीं रहता ब्रो। ट्राई टू मे बी फोकस ऑन, लाइक सपोज अगर एनिमी देखता है तो यू जस्ट स्प्रे, मतलब बेसिकली तू स्प्रे करने लग जाता है, तो उस पे फोकस कर। एंड इफ मे बी आई डोंट नो, इफ यू जस्ट टैप तो उस पे फोकस कर कि तू क्यों कर रहा है, बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों काम नहीं हो पा रहा, पे वर्क कर। क्या हो रहा है वो तुझे पता चल गया, तू काम नहीं हो रहा,
बट क्यों हो रहा है वैसा, उस पे फोकस कर। Time and they've gone C a couple times, but kind of just a fake. It wasn't ready to commit. Here we go. Should be. I was Oh, going to no, say no, 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 Shanks. Gets the double dink, responded by Android onto Steel, but that's at least going to be a free gun for us. ये बहुत ज्यादा सेटअप्स कर रहे हैं रे ब्रीच और ये साइफर के केज के ऊपर। A rifle that they can really use in the retake. Not a lot of HP though. Nitro in the long range with the buggy not going to be good enough. And here comes a potential kill from Som. We'll just miss a couple more shots, but the plant will come on through regardless. And 100 Thieves don't have the HP. इको जॉर्ड। Paint shells will deal a bit of chip damage, might make life a touch easier. Daps is also going to commit to getting the neural. Watch out for the boom bot. Oh, it's going to come off the corner and बच गया। Daps की बेइज्जती होने से बच गई। 100 Thieves retake. How do they continue to be allowed to do this? Sam in the corner. He finds one. Not the second, but the trade is there. And these are just getting way too close for comfort if you're an NRG fan, I feel like, even though you're up 6-3. I mean, how many rounds now? How many rounds for NRG come down to like a हम final दे one? दिख They won there and even है सारी एबिलिटीज फेक देता हूँ, इसका कोई इलाज है? I mean, है ना? Hiko has the ability to मत win फेक। them at least in terms of getting the kill. Like, sure, we can talk about time, but it's the kind of problem where Start NRG can't playing- get the economy going. I mean, just look at the guns. You're playing too passive, start playing aggressive, too aggressive. You're playing too aggressive. You know, every single round. जाओ ही मत आगे, छुप जाओ। Whole team dying. 3-9 prediction. Now, actually, 100 Thieves are in a position where they Nah. have more utility here. They might have Nah. with their you. ट्रिपल है Don't दिस have राउंड। more Nitro, but aside बी from पे that, रीटेक कर रहे हैं अभी। Same opening that we saw from the initial round for NRG, straightforward. I think- This is his first updraft, trying to get on top of this B site, but he still will get here. Trying to clear out over through C-Link. Aftershock again coming into play. Decent damage from 100 Thieves overall, and again it denies the ability for NRG to plant. So that's two straight rounds that we've पूरा seen मैप go घूम के यही जाते हैं। and they do force out a little bit Oh, of the damage फिर से ये जा रहे हैं। much more beneficial for 100 Thieves overall, including now even the first blood. And straight back to A we go. रश कर रहे हैं, सीधा रश कर रहे हैं। So far, I mean, they'll default on other parts of the map. Ethan, he hasn't had kills because no one Oh. goes C. Here we go. Kill. Asuna probably looking for two. Somehow misses, so that one's an official Rosa ult for sure. Very low HP for a few minutes. एक हो गया। Shanks will get a kill, and we even up 4 and 4. A lot of damage still was confirmed on the back. ईथन को एक हफ्ते पहले CSGO इवेंट खेला, आज वैलोरेंट खेल रहा है। हाँ वही। NRG do successfully get the plant. 100 Thieves lose this one. Up in heaven. He's able to find the first, Sam the second, but Ethan's on the way in. Shanks misses the right click. Was able to create a bit of space. Still 2v2. Very doable here. Ethan for one. Not going to get the snap on the EU. Now down to Hiko. No chance there. EU crouch. He's so clutch, bro. Clutch player है। Find the W and they now God. up by 4, 7-3. What a what? Shift, I have to start asking. Tom ने भी मारे रे। Tom is also playing good. He's killing all the like जो भी refracts कर रहा है सही कर रहा है लौंडा। Time दो थोड़ा। I think 100 Thieves will be really good. They are already doing a lot of good setups. और ये क्या अभी एक 4 दिन की प्रैक्टिस में कर रहे हैं ये लोग ये setups. So give them some time. Result बोल रहा है मतलब अपने टूर्नामेंट में भी कल बोल अपने टूर्नामेंट में आई थिंक कास्टास को पता ही नहीं है भाई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। They just want to get over the tournament. Why isn't Energy SU playing? Because he's a content creator, not esports player. Trying to keep the 100 Thieves defense honest by throwing the same utility over to C, but this time they'll commit Oh. through it. Android Oh no 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 no. get the timing. Nice nice nice. Towards the 100 Thieves मोल्ले defensive मोल्ले कर दे side. मोल्ले। Long play from Asuda as well. He's going to be making सारे runs. टीम क्लच Be प्लेयर्स the first point of उनके contact सुवाई for होते हैं। him. It's also a trap wire to keep things safe as NRG will put themselves in a position to set up their post plant safely through C long. Asuda is going to recognize that there are way too many contestants and Oh he will come over. Sam's going to commit to from the shadows into B. 100 T has still not made their way. ये लोग को लग रहा है फेक किया, इन लोग को लग रहा है फेक किया। ओए हगा दिया हगा दिया। Kill, maybe a missed opportunity. Asuna for one, steal another. And how about the third for 100 Thieves? They make their way on brilliant. Not like this. Nitro to play Not little like camera. this. Cleanly retake, are you oh my Time है? goodness. Is it gonna get there? Sure will. Last second retake, good from 100 Thieves again. ये यहाँ वाला कौन मरा? ये नहीं मरना था जो गैराज पे मरा है ना, इनका बंदा ये नहीं मरना था। इस लॉस जिसमें डाइसी होना चाहिए था। अबे किल रे। अच्छा डाइसी होना चाहिए था मेरे भाई सागर। तो डाइसी क्या खिलता तेरे हिसाब से? अभी एजेंट जो ये लोग खिला रहे हैं मेरे को बता। ब्रीच ब्रीच खिलाते क्या डाइसी को या फिर ओमन खिलाते?
एक बार सी प्लान किया, हार गए, अभी वापस बैक टू ए। ये देखो thing going right in favor of energy could have been the play. 100 Thieves this time will get a little bit more aggressive over towards C long. As soon will be checking over towards A long as well. Ethan is cleared. दोनों स्पॉट हो That गए। will allow Steel now to rotate off. They're just gonna rush. Oh, No, it's definitely A. Yeah, there is a lot of oh information. no 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 no. Oh, Point out is Nitro. Asana's good for one, but the trade is immediately there. Hunter's Fury also trying to get into play, and it will find a bit of damage, but no elimination. So after everything's all said and done, it's a 4v3 in favor of NRG. They get the spike planted. Do have the ability for 100 Thieves to continue to अल्ट मारा, मार दिया, अच्छा किया अल्ट मारा। run it back will also be spent. That's instantly denied by Hiko. And Ethan will reconsider his 211 Hiko को दिख गए। middle to join 100 Thieves on this retake attempt from the front. Steel already Oh. in. And the shock dart from Hiko finds the kill. Hiko, are you kidding me? Covers we go. Android good for one, but it's another two. हाफ हो गया, हाफ done. Oh, हो जाएगा डिफ्यूज, डिफ्यूज हो जाता। 3 सेकंड ही लगते हैं, डिफ्यूज हो जाता। ऐसी एक बार सीएस खेला, वो स्ट्रीमर ओनली टूर्नामेंट था रे, टीमेट टूर्नामेंट था, हो जाता। तो छोड़ा क्यों? अरे पागल, बेचारा खेला नहीं है रे, उसको आई थिंक उसको पता नहीं है कि 2.5 से 3 सेकंड के बीच में हो जाता है डिफ्यूज, तो उसको पता नहीं रहेगा आई थिंक। ये लोग CS 10 मैन खेल रहे हैं भाई, कैसे रे, इतना दम है इन लोगों में। सारे प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ फूक रखा है, यही तो नशा है जाने मन, यही नशा है। The second half, Avril tons to take away from the first. Absolutely. I mean, you've just to break down even that last run, a lot happened there. Some, or rather not some, but Ethan using the teleport from the shadows to go over towards long A, then getting cold feet. I actually think he should have stayed there. If he stays long A and prevents EU from getting a free Hunter's Fury, and I think they got a much better chance to win that round. Just being a threat over towards A is very important for 100 Thieves. But because, you know, you have kind of cold feet coming through from Ethan, rejoining Hiko, rejoining the team over to in terms of defense on Link, that kind of gives EU freedom to just do whatever he wants. And, you know, triple tag on the Hunter's Fury is what gives them that round and gives NRG the 8-4 lead. Let's see breach को T side में कैसे यूज करते हैं। I think they can still win the round. And 100 Thieves could not collect those, so they got a lot of work to do now in the second half. Yeah, at least 3 or 4, if not maybe more than that. And I'll say this much, 100 Thieves have been doing an excellent amount of work with Nitro on this breach so far. He's opened up so much space. Ooh, with Steel. B2. Can they find that same success though offensively is the real question. They're going to be taking a surround hit over towards A, in which Daps has been allowed to exist up top in heaven. The spy cam will tag one. Long range shots though will force him away, and now you turn your attention over to NRG's flank attempt. Steel here in combination with Hiko. Beautiful. मार दिया Hiko ने. And I think he realizes that no way is this the only player that's in the mix. Wide peak will get information that Android's here. He will find a counter trade, but NRG's defense on the retake from the front much more successful. Wow. It comes just down to Steel for a 1v4.
Yep, and now Steel just looking for one kill here, misses all the shots, and E will pick that one up for, I believe, his second so far this round. Some got a few as well, some go for the defuse, so what are we doing? Rushing potentially from the shadows here. उसके टीममेट लॉन्ग देख रहा था उसने मारी उधर क्या बता Let's take a look at how we are on the scoreboard here. वैसे ब्रिज को नर्फ करना चाहिए साला 3 फ्लैश बफ कर हाँ मतलब 2 फ्लैश दे तो किया भाई आई थिंक इट्स गुड आई थिंक ब्रिज के साथ कम से कम कुछ टीम प्ले तो दिखते मिलते हैं नहीं तो वही गंदा सड़ा हुआ गेम प्ले एवरी सिंगल राउंड हर टीम डिफॉल्ट करेगी एंड देन फॉर वन हिट एंड यू प्रे टू गॉड काम करे वो जिसके साथ थोड़ा यू नो देखो ये सब देखने मिलेगा थोड़ा नशा होगा मजा आएगा फ्लैश एंड डैश इनने थोड़ा गू खा लिया बट कोई बात नहीं फर्क क्या पड़ता है 1v4 था एनी व्हिच वेज Again, those stats I think all have an asterisk next to them, considering the fact that you are looking at essentially what is a brand new 100 Thieves with so many role swaps that have come into play just with Ethan joining this roster. We'll get Steel trying to continue to put pressure over towards A, just seeing if he can lurk and find any information whatsoever, but NRG have rotated over in numbers to play either around B or most specifically through the C garage. And I gotta say as well, without Jet here, it's hard to make some fast executes happen. Usually with the Jet, बराबर है वो ज़्यादा कुछ smoke and dash, you would put a cloud burst down to side, dash into it, and that gets your initial entry. That makes things very difficult for the defenders once you have to deal with the Jet as well. भाई किया है रे लोगों ने This kind of lineup here coming through for 100 Thieves, despite them only making one roster swap and 2 role swaps, or maybe just the one. कौन लर्क कर रहा है Feels like a totally different team because with Dice you had. ये लोग रीटेक पे खेल रहे हैं Jet, you just don't have that available for your team currently, so it plays like a very different team, which is why 100 Thieves right now super slowly. We're on to site, but there's like about 20 seconds left. no Lots of information off the recon bolt, but Daps is not in a position to take advantage of it. So Energy will have to forfeit and then play the What? retake. Keep in Oh, mind, they are going for it. long flank, but will he actually be starting on the way in? I think he got bodied Steal? by a steal and recognized his movement was not as smooth as he would normally anticipate. Good इतन trade भी आ गया पीछे GG 100 Thieves जीत गए राउंड play. He gets shut down even before Ethan's full flank is there, so it's actually a sheriff shot through the wall that This is confirmed the sin- location, and this 100 is Thieves not qualify it, will Chief. successfully take their 5th round. जाने मन तो वो बुलाती थी Force by here as well. Let's really get a cap of what NRG's situation for Eco here as well, because they do lose that very pivotal second round. स्टील नशे में है Screw their economy at least a little bit going into the second half. Now 100 Thieves will buy themselves extra time. I don't know. So I did say for 100 Thieves to really win this map and make a comeback happen, the force buy needed to come through and it needed to work out. So that's happened so far. So not quite sure what NRG's buy is so far this round. I can't imagine it's great. They're stacking heavily on towards A as well, except for Sam, who's playing over towards B. Doesn't see anything early on, only has a sheriff, so definitely. उसने मारा उसने मारा ये बधीर ने देखा ही नहीं Round number 6, and then we head into the gun rounds after that. इसने 2 हिट मारे रे इसको देख कितने 60 HP पे कर दिया इको को वो ड्रोन कर रहा था कुछ तो कर रहा था ओ भाई Playing a little bit deeper just in case is a shoulder scene. Eh. Yes, it is. Ah. He'll hoping आग दिया मार दिया लेकिन एक अड़क दिया था क्या डुबाया भाई Lose my lid, but the trade will be there, and we'll go 4v4 with 60 seconds to go. Yeah, lid stays on, and so does the defensive A site so far, plus a Bucky upgrade. Not the best upgrade, but you'll take anything right now. Give that one for कुछ Jimmy. भी चल रहा है Still pretty strong for. He's getting outplayed Right here is 100 Thieves get C for free. They have ultimates available as well. So second time in a row here for Nitro, where he gets a very fast rolling thunder. That's massive by Nitro in terms of timing for ultimates to do that twice in a row in 2 different halves. Probably won't have to इनका भी only use it आफ्टर गन थोड़ा वियर्ड है गैराज में ब्रीच खेल रहा है He'd like to say that बढ़िया he's इको है तो क्या ही फर्क पड़ता है round and trying to just hold on to this garage control as well. Ethan will be first contact, sees a leg, probably gets a kill. They have revealed each other's God. positioning and Nitro swings. ओ ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा 3 आने वाले हैं यहाँ पे ओ नो 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 Workout will not be a challenge initially for NRG, and now Nitro turns his attention back towards grass. नो that is risky NRG going back to Silong nice nice for the defuse, just trying to play ब्रीच में तो और भी टीम्स यूज कर रही है केविन पर timing of it, and It's not even X. पूरा कोरियंस यूज इन एवरी मैप यूयू में भी चालू हो रहा है ब्रीच काफी ज्यादा यूज हो रहा है Unless you're trying to save the upgraded weapons. Oh my god. Okay, hang on a second.
Oh. Forget that, and I'm just gonna shut up for a second because Whoa. final like 2 seconds, when the Whoa. smoke comes down, 100 Thieves are like, there's no way NRG should walk into us. I hear the footsteps, but this is not gonna happen. Surely they don't just run at us and suddenly get 3 kills, 3 taps with the shirt. Whoa. Yeah, bet. She. All the guns and Oh, that's she. pretty deadly in terms of economy shift. ये राउंड हारी तो जीजी है भाई. Economy wise GG है. Tom is ready. पूरी shopping हो गई. Even in rounds like previously we saw in NRG's offense, they had 4 in a row. Still were not able to full afford. I mean, this has been manipulation of pennies at this point as Shanks is able Not to like force this, the first brother. operator of the map. My brother, man. A bit very early on for a first blood. Bucky's going to find a bit of damage onto Asuna as well, and 100 Thieves are caught in a 4v5 situation where largely, yeah, you've got to play maybe to get onto C. And ये Korean है रे. This is Korean gameplay. 100 Thieves are playing. They're playing like Koreans. कोरियन वो बहुत फेमस है ये विजन स्ट्राइकर का, ये जो अटैक किया अभी 100 थीव्स ने. लाइक ए पे साइफर डिफॉल्ट दिखाता है, 2 लोग गैराज जाते हैं. साइफर बेसिकली साइफर का काम था डिफॉल्ट दिखा के उसको नेक्स्ट से बैकस्टेप देखना था. ये लोग दोनों गैराज जाते हैं और गैराज से फिर ओमन फ्लैश करता एंड देन अभी रेस थी तो वो डबल सैचल मारता, बट वैसे जेट रहती है एंड देन वो डैश करती है ये वाली अल्ट पे जो साइड अल्ट मारी क्रॉस गैराज से. ओह कोई we don't deserve this round, okay, but is what it is. 2-round differential, 9-7 still in favor of NRG. Here it is, Ethan now showing up top of the scoreboard, 13 and 12. I mean, this is not the type of game I maybe expected Asuna to be the kind of the top fragger here for the side 100 Thieves, but what an awkward kind of round here. They lose an initial play to Shanks, and I was going to mention as well, by the way, the operator does really punish the style of 100 Thieves here, where इको ले गया रे एक, जाते जाते ले गया, लेटते लेटते एक लेके गया अपना. get into his hands again. Obviously everyone dies, so money is not looking great, and it really hasn't looked great for either team so far in this game. Odin now coming up to play as well. So 100 Thieves, let's see if they can get more momentum. ओडिन कौन चला रहा है भाई? Who is trolling? सोवा चला रहा है? इको ओडिन चला रहा है? मल्ली यूज कर दे, मल्ली यूज कर दे. मल्ले अच्छा आई थिंक आफ्टर स्मोक यूज करेगा. ही नोस इट्स थिंग टू प्लस you're 7-9 down, you don't want to die first. Why isn't why did he Odin क्यों लिया इसने? What the fuck? Why would you buy an Odin? Heal चला रहा है Odin, नहीं Hiko चला रहा है. Hiko out of all people, Hiko is using Odin. Suez control a little bit here, looking over towards C as well. I don't think I spotted Ethan, so NRG are really working off no info. But 100 Thieves are also not taking space, so it's a stale. Look at setup ready है. They are fighting A. Oh, fail हो गया. That's going to be a camera misplaced by Steel, which is not ideal. I mean, you don't have an extra 14 seconds to wait. So I think ये Odin इसलिए चला रहा है क्योंकि ये लोग C पे प्लान करेंगे यहाँ पे, तो it's easy to get kills. Odin है भाई. ओ भाई पूरा प्रॉपर अटैक कर रहे हैं लोग तो. post plant tools that are now off the table for 100 Thieves. They will successfully get the plant, or will they? Hunter's Fury tags the first, stalls things out. The second attempt for the plant now coming through. Shanks is on the way. He misses the right click, and Nitro and oh no 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 no. The whole 100 Thieves का प्लान ये था कि यहाँ पे प्लान करके सीलोंग से स्पैम करेगा, like penetrate fire, which is easy to kill a. एंड्रॉइड ने अल्ट क्यों खोली? क्या चल रहा है? And when I say dire consequences, I'm talking about the flow-on effect from that particular round of not winning it for NRG means no money for this round, which means they're going to have to eco, which means 100 Thieves have actually caught up now. This should be 9 on the board guaranteed. We got 9 in nights, 5 in a row for 100. Odin चलाना तो वैंडल से मुश्किल लगता है मुझे. I mean, not really. Just have to pull down. Crouch करो, pull down. पता नहीं भाई, पैनिक में सब अल्ट खोल रहे. हाँ पता भाई. मेरे से बुरा हाल है. Very favorable NRG scoreboard, but a lot of yo. Steel is back to Odin. He will have to back up
up and decide if he wants to just self-sustain himself off of the hot hands or Blaze Wall, or maybe even both, considering he was down to 23 HP. ने क्या बोला? They will make a comeback on attack side, but they have breach. A Phantom, and is the only member on this team that really has much to play with. 4 Sheriffs. So now look, we've seen Sheriffs come out big. We've seen Sheriffs make some real damage happen, but NRG would have to create those brilliant moments, stacking heavily over towards, or leaning C, stacking heavily over towards C Garage. The window, hoping 100 Thieves could come close to B, but I think 100 Thieves will be too smart for that one. They know versus Pistols, going B is probably a bad idea. Just checking there's no aggression coming through on C. They'll be leaning back over towards A, and NRG again just don't have info to play with. They're going to dart over towards B grass. Sees nothing. That doesn't really tell NRG much. They see Oh no! It's a fake, baby. This is fake. If they fall for it, which they don't look like they are. Oh no! Not like this. Lines up a double headshot Nitro with the spike plant. 2v5 situation. अगर ये इंडिया में यूज होती ओडिन तो चैट में लोग गाली देते. Why? ओडिन के लिए भी देते हैं क्या? Are you sure? ओडिन से क्या फर्क पड़ता है? I think नाइफ में तो मेरे को पता है. पब्लिक पागल हो जाती है, but ओडिन में भी. If they can walk away with this flawlessly, they would be in a really good spot economically, and with the hero rifle still in play for EU, looks like that will be enough for him to likely back out and just save at this point. Just down to Sam to make something interesting happen. Not going to happen. EU is caught, like you mentioned. The flash play. EU for the first. Needs to find more than that and just simply runs out of ammunition. So 100 Thieves will take him down. They tie this game up at 9. I think if EU really wanted to save the rifle, he shouldn't have even gone to heaven. He should have just stayed over towards C, stayed in spawn, played very safe. Indian fans black Excalibur Odin future alright should be banned in India. What? Odin के लिए? Anyway, so you know, perhaps trying to take away some guns from 100 Thieves could be गाली को पड़ती थी. Big difference here, Chef. Odin use करने के लिए Excalibur को गाली दी. These are not just winning by the seat of the What? now. It's not a 1v1 they're winning by. They're winning convincingly. No aim, no skills equal to Odin. Fair economy, and that's the biggest difference between I think this half and the previous. मेरे को पता था नाइफ फाइव करने पे तो चुतिया पर हो जाता है, but Odin पे भी होता है. वाओ. असुना भैंचो कौन सी अल्टे मार रहा है? असुना भाई को क्या हो रहा है? जस्ट क्या अल्ट मारी है भाई ने? They are rushing it. Oh no. This is a fucking great call by 100 Thieves first of all. क्योंकि पता चल गया है कि एनर्जी वाले नर्वस है अभी ये टाइम पे, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा नर्व्स आ रही है. तो इफ यू रश वो लोग हड़बड़ा जाएंगे एंड दे विल मेक मिस्टेक डेफिनेटली. ये देखो उन लोग के 3 ए होने के बावजूद वो लोग कुछ नहीं कर पाए. फॉर अबाउट 20 सेकंड्स इनको पता था कि रश हो रहा है. चैट नहीं देगी थी जब भी सुना एक से भी बदीर अल्ट मार रहा है. एक भी अल्ट नहीं लगी आई थिंक उसकी अभी तक. कि गंदी अल्ट मारी है भाई ने. Who just barely dashed away from. Spy Cam will come out. Gets the tag. Tries to make the play, but Hiko denies. Obvious play from Hiko. It was like full confidence. You look, they are getting nervous. Energy is getting nervous. That is Suzanne. ये देखा पट से अल्ट खोल दी. वाइंस में नेड़ी करते थे. They'll be 2 behind. They can definitely still force the overtime. It's very likely that 100 Thieves. I think it was a fucking genius call क्योंकि ये लोग पूरा गेम डिफॉल्ट किया अभी तक. और 9-9 is a crucial moment. मतलब बहुत crucial stage है एनआरजी के लिए क्योंकि उनके पैसे के एल लगे पड़े हैं. I think it was a great call by 100 Thieves. मतलब तुम सोचो 20 सेकंड से ये लोग अर्ली पुश टॉल कर दिया था एनआरजी ने, बट उसके बाद भंड हो गए क्योंकि वो हड़बड़ा रहे हैं कि क्या करें, कौन प्ले बनाएगा, शुड वी डू समथिंग, शुड वी नॉट डू समथिंग. जी हो गया ये तो. to tie things up, but it would be a pretty incredible one, you feel like, considering the arsenal disadvantage that they're in. But Android with the judge is going to be trusted to try to lock down this first point of entry
And EU has already done some great stuff with the sheriff. He's going to likely find some information off this. आई थिंक ई को पता है कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इतना इंस्टेंट एरो दो बंदे मिलके नहीं करते. मतलब समझ लो, अगर दो बंदे ले रहे तो इतना इंस्टेंट एरो तोड़ेंगे नहीं. ही शुड नो कि 3-4 है, और ये लोग को रोटेट ऑलरेडी करना चाहिए फटाफट. इट्स लेट, दे आर ऑलरेडी इन. दोनों स्मोक फ्लैश. ये थी सल्ट यूज कर रही है इको में. या आई थिंक स्टील ने बोला था उसके कुछ तो स्ट्रीम पे कि दे जस्ट वांट टू सिक्योर द राउंड, दे डोंट केयर अबाउट द अल्ट यूसेज. बाहर आ गया, बाहर आ गया. वो गंदा था ईथन का. ईथन का स्मोक बहुत गंदा था. व्हाट अबाउट एनर्जी एसी? वो ब्रो दैट ही वाज, ही इज अ सीसी कंटेंट क्रिएटर. ब्रो उसने ये क्यों स्मोक किया ईथन ने? व्हाई डिडंट ही डीप स्मोक्ड? ये कितना बल्क स्मोक था वो स्मोक. दैट स्मोक वाज द इनविटेशन. मतलब वो इनविटेशन दे रहा था सिटी वालों को कि भाई वो स्मोक के थ्रू पॉप करके दिखाओ दम है तो. उसके बाद सबसे गंदी चीज पता है क्या हुई? ये स्मोक करके वो बंदा प्लांट भी यहाँ दे रहा है, राइट में. वो स्मोक के थ्रू भी मारता तो भी मर जाता, बट इसका तो कंफर्म था मरना बॉम्बर का. 3 राउंड इतना अल्ट वेस्ट किया है लोगों ने, 130 वालों ने. या फास्ट सी रश या व्हाटएवर दैट सी स्प्लिट. ओ एफ. अच्छी पोजीशन थी सोम की, बट इशारे के सामने ब्रीच खेल रहा था. मुझे यार हाँ बस सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ. जस्ट 5 minutes, आई एम डेड ऑलरेडी. आई थिंक पीपल हु कैन गेट रेड मूवमेंट फ्लूइड जस्ट प्रिपेयरिंग जोन हैज मास्टर्ड इट. सबरोजा ट्राइड एंड फेल्ड. Sabroza is also really good, but he is playing for the team. Sabroza is insane on Omen. So he's playing Omen and Android is also insane. अगर somehow ये मैप 100 Thieves हार जाएगी ना, they will just choose on themselves. ये उन लोग खुद की गलती की वजह से ही हारे हैं. Don't give him 1v1. Don't give him 1v1. Oh, Hiko, again and again and again and again. Hiko भाई, again and again and again. ऐसी का boot camp हो जाएगा 15 तारीख तक. Iron is India, beauty player is questioning and pointing. Christian energy is IGLing. Iron is Indian, B tier player is questioning and pointing. ये tier तक ठीक था. मैं कहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ? डम और व्हाट? भाई को ने निकाल दिया भाई. क्या बचा है? बेंचो 10 पे ही मारा वो भी. ओ Shanks has made his way into the window. Android watching over towards the boxes. And you still have a player in Daps that's denying any push through a mid. And oh my goodness. कसम. Kills and NRJ say, job done. Let's just play the rest of this round out 5v3. हार के आगे भाई. Why did Sami left? Assai. That is going to be pretty awful for 100 Thieves. That will at least get traded by Steel. And here comes the sewer play. Easy shot from Dabs. Gets a free upgrade. Spike on the floor. And now Steel in a ton of trouble. Eco God, Eco God. Otherwise, he'll be overwhelmed from behind. By GT 710. No idea. I have zero idea. Zero. Nerves of Steel, no pun intended. भाई पुश कर दिया भाई एनर्जी ने. एनर्जी लाइक फक इट, हम लोग हार ही रहे हैं, पीछे से खेल के आके जाके देखते हैं. गैंग मेरा फेवरेट है क्योंकि उसने जो कमबैक किया है. One of them had to defuse. आई थिंक वो मॉली डाल रहा था इसलिए उसने डिफ्यूज नहीं किया. आई थिंक जो फर्स्ट बंदा मरा था, आई डोंट नो, was a 3v1. Time was low. He thought he would kill him.
Thieves will be stacking over towards mid. NRG had an early clear though of A long. 3 players stacked that direction. And with a little bit of aggression through C, they should know that this play is online. Showstopper denied. Sam finds a second. He stabs to a third. How about a fourth? No. Ethan able to keep मार this दिए ball भाई alive 3 for 100 टॉम भाई ने मार दिए Daps now मजबूत वाले मारे वो भी from the side. Easy shots there, and NRG cleanly get the retake. just Oh my goodness, what just a like play that from Sam. energy is back Just keeping the nerves just down like there that on NRG. Okay, we've lost B control. 100 That's fine. भाई वो जो इको हारेंगे ना वो That's something that Raze players are not prepared बहुत ही for. गंदा When the टिल्ट था showstopper comes through, you're not बहुत ही expecting मतलब someone to just बहुत ही run गंदा through. टिल्ट That's the exact counterplay you need to see versus the showstopper. We can see it here again. Into the इक्का top again already there. Dive straight into the rhythm here. Even क्या if मारा the इसने kills बहनचोद themselves व्हाट द फक थर्ड वाले को नाइट्रो को क्या मारा Plant does come on नाइट्रो through. की जिंदगी छंड कर दी Can't get a rifle upgrade, and that point secured by NRG now. A big round for वो 100 Thieves. वो इको में Winnable. 3 ultimate बहुत ही गंदा हुआ बेचारों के साथ potentially have this one off the back of a opening kill from Shanks would probably be it if someone like Steel does peek him. Steel does like to go over towards A. He's thinking about it, but drops the trap wire at the entrance to the A lobby. Asuna एरो मारेगा pressure through C garage. ओ This time it's नो not नो able नो to नो 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 instead be EU. Sam, lots of pressure in his face, but Daps is a part of this play all of a sudden. Stays alive through the curveballs and flashpoints that are coming into play. Now it's आओ down to आओ can NRG आओ 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 flashpoint in the mix. ओ Reveal comes out, but oh no, Daps is fully flashed up. He नाइस अल्ट भाई इको Fury in for an elimination. It's a 4v3. Run it back in play for Android. Not going to find much, but does clear space for EU to make sure that the C site stays safe. And 100 Thieves had to reconsider with 50 seconds to play. Seals here as well. 100 Thieves will bang 3v3 on the fallout of that play. हील के पास Both पोजीशनिंग teams तो are just अच्छी है fighting, but it's low HP they here are just for EU. waiting Could actually make the difference. You also have Shanks still. एनर्जी भी ओवरथिंक कर रही है Too sure. The good thing for 100 Thieves here is they can play the timer here a little bit, allow NRG to rotate out, and that's exactly what's happening. NRG have no. कहाँ जा रहे हैं ये लोग And 100 Thieves, the gambit ends up being correct. The dart will reveal nothing. The plant will come on through, and it will have to come down or retake. The two duelists for NRG quickly. हील की पोजीशन अच्छी है हील नीड्स टू Nitro just had kill one and stay alive I think Blades are out for Shanks. Can he make a play to try to save this? Take a 13-11. Fault line stalls the hit. Recon Bolt, as you mentioned, came through. Nitro sees a bit of information, but wants to play off the intel onto this Sova player, but it's Shanks over the top for one. wait for steal wait for steal Eco, he finds one elimination. Steal the backside. भाई 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 Overtime. 100 Thieves. भाई 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 एफ होते होते बचा है एफ होते होते बचा है स्टील ने स्टील की 5 गोली देख के मेरी फट गई भाई जो 5 गोली चलाई ना स्टील ने स्टार्टिंग की उसको देख के मेरी फट गई व्हाट द फक They get 6 in a row from that second round in the half, and then look at this round as well. Coming down to a 3v3, I thought NRG did a great job of holding on to site there, preventing the initial plant. But then as the dust settles, as was said, when we look at the time, it's still just enough time for 100 Thieves to maybe bait out the fact and gamble the fact that, hey, they might think we're rotating here. Let's go completely quiet, just hide in garage. As long as no one checks here, we're fine. NRG go over towards A, the plant is free, and the post plant is even better. The retake not good enough. And to the OT we go. Everyone's got money, and this has been close enough that it's hard to call. You're not going to catch me trying to make a prediction. चुदा ईथन चुदा 60 एचपी गई उसकी Every minute of it. It will be NRG on the offense here. A lot of team shots were thrown Ethan's direction. Tagging up a little bit, but now Steel has rotated into assist, and he will respond with some damage of his own. ये So once रीटेक again, NRG और गैराज kind of the same पैसिव that we मतलब saw from the कैमरा पे front. खेल रहे हैं Throw out डबलिंग Dark 3 C2 है Throw a little bit of utility, see और if इनका आई they थिंक can ये कोई तो stay फ्लैश on लेके the खड़ा है ये field. ट्रिप पे फ्लैश करेगा बेसिकली And they've done that successfully. Now the wrap as they हील की ट्रिप पे फ्लैश करने वाला है They have to start remembering as well, NRG, that is how they got those offensive rounds. Again, 8 rounds there that they got on their initial attacking half. A lot of गुड लक फॉर यू नेट कभी भी जा सकता है हाँ ये ओटी फटाफट खत्म हो भाई एज लॉन्ग एज इको इज अलाइव एनर्जी वालों की थोड़ी फटती है As soon as sees nothing, camera's just going to check over towards a main
Still 40 seconds and NRG aren't sure. I think NRG believe that there's 100 Thieves are stacking A. They've kind of read this one incorrectly. They've made some plays over towards C. They made minimal plays onwards A. They're going to time left. गैराज से सी जा रहे हैं लोग. Running over looks to be towards a C hit. This is a difficult gamble stack that you have to kind of get through. Nice paranoia that stalls things down. 15 seconds on the रिस्क है भाई. hit now underway. लेकिन रिस्क है तो ही तो रिस्क लिया है. गया स्टील गया. They traded every single kill. और टैप्स की पोजीशन सेक्सी है. I think GG. GG. Nice one energy. टैप्स ने परफेक्ट लर्क किया. Everything was on point. Trade. नेट क्यों जाने वाला है? मेरा नेट सुबह 5 बजे रीस्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली. So it's not in my hands. Blind patch 2.0 what does that mean? इसका मतलब बेसिकली वो पैच पे गेम चल रही है. 2.03, 2.04, 2.02 पैचेस अपडेट होते हैं. भाई फट से खत्म हो, मैं बंद करूं क्योंकि अटक जाएगी स्ट्रीम, पूरा बीटी हो जाएगा. ये लोग देखो भाई, एनर्जी वाले देखो 4. ये लोग भी गैम्बल कर रहे हैं. और ये देख, इसको देख, शैंक्स को देख. आई थिंक इसने कैलकुलेट किया हुआ है इतना डिस्टेंस क्या डैश का, मतलब डैश का सॉरी. स्मोक ही नहीं है भाई, क्या स्मोक एंड डैश. जी बाय बाय इन एडवांस, कल मिलते हैं. हाँ भाई, जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे फॉलो कर दो. ये भाई राउंड के बाद खत्म है, ओटी हो या ना हो. और ये टॉम भाई को नहीं पता था, आई एम सॉरी, टॉम भाई को नहीं पता था डैश के बारे में. भाई ये मर जाता अभी. ओके बॉयज, तुम लोग देखो ये स्ट्रीम. मेरे को लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी अनदर ओटी. मेरे को नहीं लगता एनर्जी रिटेक कर पाएगा. Maybe they can. No, they can't. You guys can go watch this stream on Nut Street Gamers या फिर vlr.gg पे जाओ. You can go and search it. Thanks a lot for tuning in. जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर दो. गुड नाइट, कल मिलते हैं दोपहर को मोस्टली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई थिंक कितने 60 लोग थे मेरे साथ. सोचा नहीं था ये मैच देख लिया, बहुत नींद आ रही है भाई, सर दर्द दे रहा है मेरा. गुड नाइट, बाय बाय.